হ্যালো, অয়ন শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো। হ্যালো, আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস? অয়ন চৌধুরী। I can hear you. ওকে। একটা মেসেজ করে দে নাহলে গ্রুপে মেসেজ করে দে, বুঝলি? অয়ন, তোর কাছে অ্যাডমিন পারমিশনস আছে কমিউনিটি অ্যাডমিন গ্রুপে, ওই অ্যানাউন্সমেন্ট চ্যানেলের? হ্যাঁ দাদা আছে। তাহলে একটা মেসেজ করে দে, ইভেন্ট হ্যাজ স্টার্টেড, প্লিজ জয়েন। বাকিরা কোথায়? ইয়েরা আসবে না? হুম। কি যেন, অর্ণবরা, ওরা বললো আসতে লেট হবে। সুজল, অরিত্রা সবাই আছে, ঠিক আছে। ওকে, নো প্রবলেম। হুম। ओके, 5 मिनट ऐसे बात करते हैं, उसके बाद विल स्टार्ट। इज एवरीवन हियर ओके विथ बंगाली, इंटरमीडिएट बंगाली? कोई ऐसा तो नहीं है कि एकदम बंगाली नहीं आता है? कोई हाथ उठाओ। थैंक यू आदित्य। नो बंगाली, ओनली हिंदी। सम हिंदीज वांट टू प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट अकेला मैं करूंगा। 28 participants, नो बंगाली।
Okay, okay, I'll talk in English then. ये आज का एजेंडा ठीक है. So we'll talk about the brief history of how internet came into being. In the early 1969, uh, the creation of ARPANET by Department of Defense, United States of America. It was during the onset of the Cold War with Russia. So they made it exclusively for their internal, security purposes to convey information from one point to the other extremely quickly. Right, messages. So what I'm wondering is if anyone of you can tell me the definition of internet before we go on, move on to the first item in the agenda. Does anyone know? Unmute कर सकता है, I think. Can people unmute on? एक host रहो, ठीक है? Yes, Can Bhaiya, they anyone? can unmute. Okay. So you can unmute and say if anyone knows the definition of internet. Wrong answers only. And everyone knows information, like definition of internet. Just, curious what you want to say. नहीं नहीं ऐसे ही इंटरैक्ट करो, ऐसे चुपचाप रहने से नहीं चलेगा. Freshers, I think most of these are freshers. I'm pretty sure. Guys, please have an interactive session. टेक्स्ट ही कर दो लज्जा यार, आ रही है, चैट चैट में लिख लज्जा आ दो. रही है क्या? हाँ टेक्स्ट भी कर सकते हो बहुत I if you're don't think feeling the shy. microphone is enabled, so you can just text, guys. Yeah, अरे टेक्स्ट कर दो. I don't like quiet. It just feels very lonely. सन्नाटा लग रहा है. Unmute का ऑप्शन नहीं आ रहा है. Have you not? I think you missed the permission. मेरा तो आ ये देखो यहाँ पे जाना फिर you'll see camera, microphone, sound और microphone enable कर लो and then try talking. बहुत बढ़िया. How do you define internet, bro? Oh my god, all Gen Zs here, you don't know the definition of internet, you use it every day. What the fuck? Network of computers is internet. That's the wrong answer. It's a network of people wanting to share memes. That's internet. Okay. Yeah, that's correct. Network of computers and internet. I mean, roughly this is what we went to start everyone there. Yeah. 41 people. Okay. Nice. It's a network of computers. Yeah, that's right. Um, before the way we used to define computers 30 years from now was very different. And nowadays, computers include also our mobile phones, also IoT devices, medical devices, that send the health info about a patient, let's say heart rate, over the internet to devices, to a doctor's dashboards, or security devices, security cameras. They're also part of the internet. It's just not always about computers. There can be different types of sensors, input devices, this, that. Yeah, roughly, you can say this is the short and sweet definition of computers. Yeah, if any of you, if you have friends, please DM them. मेरा थोड़ा publicity हो जाएगा. Ask them to join the session. Anyway, so we'll go to I don't remember the history of internet that well, so I just created a list of 10 events with ChatGPT that led to the creation of internet. I was just briefly go through, because I'm not here to talk about history, right? I'll be mostly talking about how the physical. Yeah, we'll be mostly talking about the physical layout of the internet, and these are the bigger topics to talk about. This one: hosting web applications, building web applications, web browser. It's impossible to cover all of these in 2 hours, 3 hours. Each of these topic, I can just stretch it to keep talking for 3 hours or more. It's vast. It's really vast. OSI model तो तुम लोग का third year people who are in IT and CS branches, circuitry branches में हो, उन लोगों का computer networks रहेगा, and their computer network syllabus in BTech will mostly comprise of the OSI model.
Okay, third year. It's just third year stuff. So it's impossible. I mean, एक semester का चीज 15 मिनट में करना possible नहीं. But I'll just the plan of this event, the goal of this event. I have done this session 2 times before this, last year and the year previously, in AEC. One was from an open source event before Hacktoberfest, and another was GDSC last year when I was a team member. So this is the third time of me doing it, and then it's extremely important that you understand, because most of you will be building applications that concern the web, right? You will be building applications on the web because that is the fastest way to get started with application development. At the same time, this is where the money is, in short. Okay. 48 people. हाँ ना बोलो, अरे यार कोई भी सब unmuted मेरा भूत होता है. Send them in the Q&A section. Or you can ask. I mean, ask right away. It's so sannata. You can ask questions. You can stop me and ask questions. If it's not interactive, it also becomes extremely boring for the speaker. Okay. So please don't bore me. I sleep on my keyboard. So anyway, so brief history, starting with brief history. अभी तक कोई नहीं बोला है. देखो छेले में शौक है. And no one is also texting. All introverts taking admission now in EC. Oh, sorry, EC, BTech. BTech. All introverts. No social skills. Anyway, so brief history. Okay? So brief history, I have curated a list of 10 events. What is ARPANET? What is the full form of ARPANET? Does anyone know? ARPANET? Anyone who had computer science, computer applications, ICSC, CBSC, 9, 10, 11, 12? Show me some internet free मिलेगा, start interacting. Who's sponsoring Gagan? एक दिन का स्पॉन्सर कर सकता हूँ. कौन करेगा? कर देता हूँ मैं. ठीक है. जो सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता. Okay. At some point, वो मीम होता है ना, वो जो अंबानी बोलता है कि अच्छा बात बोला इसका 2 GB बढ़ा दो. नहीं, ये सेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट भैया, लास्ट ईयर जब मैंने ये सेशन किया था तो बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला था. लाइक इंटरेस्ट जागा था नेटवर्किंग का. बेसिक्स नहीं आपने बढ़ाया था, बट द थिंग्स लाइक जो थोड़ा बहुत बेसिक्स हिला हुआ था वो आपने कवर किया था बहुत अच्छे से. मतलब इंटरेक्शन बढ़ा था मेरा. तो जूनियर्स प्लीज इंट्रोवर्ट मत बनो यार. मैं भी खुद इंट्रोवर्ट रहा हूँ, बट प्लीज ट्राई टू इंटरेक्ट. Gagan is a good kind of introvert. He stays quiet until it's time to speak. Showing microphone blocked even before entering the meeting. Is this a problem? Mods, can you check? Sanjay, no problem. It's okay. बेसिकली अगर वो लोग प्रेजेंट एज अ प्रेजेंटर ज्वाइन किए तो लोग अनम्यूट कर सकते हैं, बट एज एन अटेंडी अगर ज्वाइन किए तब आई थिंक अनम्यूट नहीं कर सकते. Are there the options? No, but I can unmute and speak. Dipshika Soni, she's I think she's an on-call member. Oh yes, Rameshwar Teli. Yeah, you can talk then. I guess you can talk. अभी microphone on हो रहा है धीरे-धीरे. चलो कोई नहीं. Let's start with माइक ऑन नहीं हो रहा था क्या? पता नहीं है, जान ही नहीं रहा क्यों चुपचाप था. हम बहुत जन का देख रहे हैं. अभी शायद सब ऑन कर सकता है, लेकिन जिनका नहीं हो रहा है अभी उनका परमिशन इशू है. ब्राउजर को परमिशन नहीं दिए हो. हाँ, परमिशन बाकी सब ऑन कर सकता है शायद. अभी यहाँ पे चेक कर लो अगर जो लोग ये में यूज if you have joined. Oh, I can I think show you on my Android also. ठीक है. So if you go to this option, this thing, this one, you see, yeah, toggle. Then go to permissions and then इधर microphone enabled होगा. इसको enable कर लो. Okay. Please stop. Okay, so we'll start seriously now. Okay, so ARPANET. Anyone knows the full form of ARPANET? Google करके ही बोल दो. Try to make session interactive. Yeah. Is there anything started? Not yet. We're just getting started.
So ARPANET is, मेरे को खुद फुल फॉर्म याद नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, बोलो कोई. एडवांस हाँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, राइट, करेक्ट, यही है. Abhi ARPANET was actually created by ARPA. You know, I think it's a sub department of DoD, in US DoD, Department of Defense. So Abhi is organization ko you must have heard in news if you follow international news. DARPA कहते हैं इसको. You know, one of the leading. I don't know. I think they also manufacture weapons. Okay, missiles and stuff, defense weapons. So anyway, so ARPANET was, one of the very first networks that United States actually generated, only for security purposes. But then they open sourced it sometime later. Like here, I think they haven't done it. They haven't said it exactly, but yeah, they later open sourced it for the public. So this was slightly in the 1970s. It was 1974, yeah, something maybe. And then you'll be surprised to know that internet, as we know now, was nothing like it was in the early 70s, 1970s. तब क्या था ना? Can you speak slowly? Oh shit, this is my weakness. Okay, I'll try. Okay. So, ठीक है. So the internet that we know right now, है ना? जैसे हम लोग जानते हैं internet. It was not like that. In 1970s, it was like emails. Okay. AOL. Do you remember AOL? Anyone knows AOL? You were born way later. I think all of you were 2005, 2006 kids at that time. Internet थोड़ा थोड़ा आने लगा था इंडिया में. But I am 2001 born. Okay. I'm very old. Much older than you all. I'm 23 right now. So 2001 born में in those times वो Nokia का वो जो brick वाला फोन आता था, ईटा वाला फोन. तो मतलब फेंक के मारो तो सर फूट जाए, वो वाला है ना, वो वाला फोन आता था. देयर वाज नो साइन ऑफ इंटरनेट. आई स्पेंट द फर्स्ट 10 years ऑफ माय लाइफ विदाउट इंटरनेट. उसके बाद व्हेन आई वाज लाइक 10-11 years old, उसके बाद साइबर कैफे में जाने लगे. बीच बास में वो छोटे छोटे ओलंपियाड्स होते थे, तो उसके स्कोर्स जानने के लिए हम लोग जाते थे. बट एनीवे, सो एक्चुअली द इंटरनेट थिंग, the timeline started back in 1969 with ARPA, and then 1971 it was the first introduction to public use. ठीक है, इंटरनेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सो उसमें क्या होता था, ओनली ईमेल यूज्ड टू बी देयर. AOL बोल के एक अमेरिका ऑनलाइन बोल के एक सर्विस होता था. दे यूज्ड टू प्रोवाइड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस एंड ईमेल. ठीक है, अभी दैट डजंट एग्जिस्ट. द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट चैटिंग ऑफ AOL बेसिकली यू सी इन nowadays in Facebook Messenger, Instagram Messenger, so on and so forth. ठीक है, WhatsApp also. So it was first started during started by AOL, if I'm not wrong. Okay, so the first use of internet was sending emails. So Ray Tomlinson developed email. This is the name of the developer of the email protocol. I'll tell you what protocol is, all of the jargon coming up. Okay, let's slowly move on to the next event now. So enabling users to send messages between computers over the ARPANET. Okay. Okay, I can show you the ARPANET map. I remember I showed it last year also. This is the logical map. If you see ARPANET was basically composed of US Defense Department agencies, buildings in the US Defense sector, and some leading universities. मतलब जिसको हम लोग Ivy League बोलते हैं आजकल, है ना. If you look at this map, ये जो different ये जो देख रहे हो ना, PDP-10, PDP, PLI, PDP-11, 360, 67, PDP-11, Nova 800. These are all early computers. If you Google them, they are like huge computers, size of rooms, I think. Yeah, these are. So this was the early ARPANET. This was a network of these CDC 7600, PDP-11, DEC 2050, Harvard, Aberdeen, Pentagon, you know, US Pentagon. डिफेंस रिसर्च, कैदियों को भरा जाता है, हाई सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी लोकेशन है, एंड इट्स इम्पॉसिबल टू गेट इनटू पेंटागन. नो टेररिस्ट अटैक्स सो फार. 30,000 people working in every day. So this is Pentagon. Texas, I don't know what these, Gunter, Eglin, I don't know. ARPA, NSA, ठीक है, National Security Agency. ठीक है, they monitor the dark web.
one of the biggest contributors of dark web defense against the crimes in dark web in the current world. Dark web, anyone knows? How many of you know dark web? You can raise your hand or meet a speaker or anything. Anyone heard about dark web? Shiva Modi has heard. Sneha Singha. You all know dark web as something, a scary entity, right? It's not scary. The main reason of dark web was actually, it was also a product of the US defense research. So everything was started by the US. So sad. India has done nothing. Anyway, so dark web was also meant to, anonymity के थोड़ा ये करने के लिए, because censorship को remove करने के लिए people had created dark web. But then later it also started using anonymity is synonymous with anonymous crime. So anonymous service usage, those services can also be criminal services. You can hire a hitman on dark web. So even though 5% of the visible internet you can browse through Google, 95% is invisible. Okay, you need special network access to enable all those websites. Dark web is not all bad. We'll come to it later. So coming back to the map, let's see. Stanford University. Something, there's also a curvy line going to Hawaii. I don't know, this is resistance. What is this? Timeshare, Xerox Corporation, the first company that made photo printing machines. Nowadays, commonly, in common language, we consider Xerox, हम लोग बोलते हैं तो वो photocopy, black and white photocopy को हम लोग Xerox बोलते हैं, but Xerox is actually a company. ठीक है. Sumex, NELC, some of these company names you might have heard. MIT, these are the MIT computers in MIT 44, MIT 6, Illinois, Utah, whatever. I don't know this. Okay. So anyway, this is the logical map, and there's also this, and this was the early map of internet. This is the USA का जो map था. This was the early internet. Around the same time in 1970s, early 1970s, Russia में भी similar networks were being developed, but USA में काफी they were way ahead in technology, in terms of technology, and I think the development of internet was one of the biggest boosts of the US economy. And basically, the Russian counterparts were way behind, and slowly and gradually, the US the protocols, internet protocols that were developed in the US took over the whole world. उसके बाद ARPANET ही एक publicized हो गया, and then clandestine. I think there was something Italian network called clandestine where the term internet was born. But anyway, so this is an interconnection of network in the early 1970s. This is ARPANET you are looking at. Okay. Stanford here, UCSD, I don't know. UCLA is a company, university. Here इधर कहीं पे MIT लिख जाएगा. MIT, Lincoln University, Harvard, London वैसे अच्छा लंदन, maybe it goes to London. Kirtland, UCB, ठीक है. मजा आ रहा है? ये पता था पहले किसी को? मैप देखा था तुमने ARPANET का? Anyone? So quiet here. नहीं भैया, फर्स्ट टाइम देखा मैंने. मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है. सो भैया, पता तो डिफरेंट है. हाँ बोलो. एक्सक्यूज मी. हाँ. सो भैया, ये बेसिकली ये जो मैप है वो क्या मतलब नेटवर्क का मतलब Early इंटरनेट का नेटवर्क वो शो कर रहा है? Yes. अर्ली 90s का. Very early 90s नहीं, 1969, way early, बहुत पहले. इस टाइम इंटरनेट पब्लिक नहीं था, ठीक है. उस टाइम you couldn't connect to public. These were like wires and different computers connected together. Client server का approach नहीं था. The only way to communicate. This was just a way of communication. Emails वगैरह भेजना, ठीक है. So बेसिकली भैया ये जो स्टार्ट हुआ था वो तो यूएस आर्मी ने स्टार्ट किया था ना फॉर कम्युनिकेट करने के लिए अपना. Yes, US Defense Research. They created ARPANET. Okay. And through satellites, I think through transponders, they also extended the network to, US heli carriers and what do you call it? The Navy carriers. जिसमें वो ना ship take off करता है. You see the big carriers. Are they called Navy carriers? What do we call? Yeah, these all. So there were different transponders, and ARPANET also included these, I think, in early stages. Okay. उसके बाद they made it public. So later on,
different, ये तो अलग अलग nodes देख रहे हो तुम लोग, तो बहुत सारे और nodes started being born, and currently the internet map of the internet, I don't know, let's see map of the internet. I mean इतना dense दिखेगा ना, पागल हो जाएगा. Map of the internet. नहीं, they are showing the cable map. Not this. There's no map in the internet. There's only map internet coverage. क्योंकि map इतना dense होगा ना कि represent करना ही difficult होगा. This is like the world online. This is how you represent it. So sad. India में 2040. How many? Which or 2013 data? Okay. Very old. So anyway, coming back to the history. Okay. ARPANET, email invention, 1971, transmission control protocol. We'll come to protocol slowly, but you just remember that modern day internet actually depends on these two protocols. The protocol is a set of rules. जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो इंग्लिश और हिंदी क्या है ना, एक प्रोटोकॉल. What is a protocol? Do you know the definition of protocol? रट्टा मराया जाता है लोगों को. अस मोमेंट भैया, और कितना मैप्स है, और कितने मैप्स हैं? यूएस मोमेंट. अच्छा, कितने मैप्स हैं? You should unmute and say, because I'm not going to look at the chat again. It's very distracting. I don't know, man, how many maps are there, but this is 1973 updated logical map. More maps are there. Just go to the ARPANET wiki page, okay? And you'll also find links to different PDFs reports of the ARPANET, early reports, how ARPANET works in general. There's a 73-page PDF last year I downloaded and showed to people. So anyway, coming back to this, so internet protocol, I'll come back to this, okay? The protocol is actually in depth, but yeah, in 1974, 1974, both are 1974. Okay, internet protocol and transmission control protocol was invented by extremely smart people who gave the foundation of the internet, okay? And nowadays we still use this internet protocol. Internet protocol is a way of addressing. जैसे हम लोग घर में addressing करते हैं ना, जैसे मेरा घर का address है, मैं बताऊंगा. your घर का address. चिट्ठी कैसे आएगा? घर के address पे आएगा ना. So internet protocol actually takes care of how devices are addressed in the network, in the internet. And transmission control protocol is like the post office. मतलब ये तुम्हारा घर का address है. This is the rules concerning your घर का address का structure. And this is the rules concerning how the postal packages, they're called packets, will be transmitted from one point to other. Okay. Oh, I was actually supposed to show this. Yeah, I'm coming to this. Very interesting. I'll come to this. Okay. Yes, Aditya, I know this one. It's actually one of my favorite sites to show. So internet protocol, done with this. Okay, first networked applications. Now, various applications like the FTP, file transfer protocol. This is unencrypted, by the way. Like if you are, watching the wire, then you will probably be able to see what the people are sharing with each other. So this was an encrypted protocol. This is not used nowadays. आजकल सब HTTP में ही हो रहा है. So I'll talk about protocols. When I talk about protocols, you know what these things are. FTP, ये वो ये. So TCP/IP adoption 1983 में TCP/IP was the de facto standard of the internet. It was setting the standard for future networks and marking the birth of the modern internet. This was one of the biggest events. Okay. Now domain name server also, I'll be coming to this. Domain name server मतलब in short में अभी के लिए बता दे रहा हूँ. जैसे google.com, ठीक है. So Google, I just told you, right? You know about IP addresses, right? IP addresses. Everyone knows about IP addresses. Anyone who doesn't know, just raise your hand. I'll just repeat them. Anyone knows what IP addresses are? Anyone who doesn't know, most people will. Raise your hand if you don't know. Okay, I'll tell in short. ठीक है. तो IP address is actually a way of like हम लोग का घर एड्रेस है, वही IP address है. अभी मैंने बोला ना, device her device का in the internet has unique IP addresses to make sure information transfer is taking place securely. मतलब how will I know कि तुम्हारे घर में मेरे को google.com का response भेजना है तुम्हारे कंप्यूटर में? How will I know? Because your computer has to have a address ना, जो google.com के सर्वर्स को पता होगा, तभी ना वो लोग they will send back the information, the search results they will send back. All this is .go. So this was the this is IP address. ठीक है. IP address is it looks like this. This is a local IP address. Like that. 1.6 होगा, sorry.
1.6 server, ठीक है. But this is how the IP addresses look. 3 dots and a bunch of numbers, 0 to 255. Okay, 4 numbers. So now coming back to this topic, domain name services. Generally हम लोग IP address लेके और services को access नहीं करते इंटरनेट में. We actually have domain names, है ना. Google.com करते हैं तो Google.com का server हम लोग access कर लेते हैं. We are not using IP addresses at that time. We are not exactly. Also coming back to it later. But you know the fact, the best place on earth, 127. Yeah. Also, people will need some background knowledge to understand. This is localhost. Okay. Localhost is where you first will develop your web applications. So this is the best place on earth. What is this? We'll come to that, Dipshika. We'll come to this last topic here. This one. I mean, you can already understand. Like I can keep talking about each topic here, like hours upon hours. There's a lot of things to say. Very interesting things. And then, okay, so the domain name system is, you know, like a service that translates google.com to an IP address. google.com को change करके उसका IP address में convert करेगा और वो IP address में फिर trigger करूँगा अपने browser से. जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना .com, तो ये जो है इसका this actually you know translates to an IP address internally. वो कैसे होता है वो भी हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो. अदरवाइज दिस सेशन विल बी रिपीटेड टुमारो नहीं देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब होगा. But this is going to be a pretty long session. I don't know if I'll be able to cover everything within 2 hours. So bear with me, okay? So this gets translated to an IP address, and that translation, the service that is used to translate that, is called the domain name service. Okay? Okay. Oh, domain name service, domain name system. Okay. And now the first web browser was in 1989. वो develop हुआ था. Tim Berners-Lee. He was also one of the founding members and I mean, you know, people who were very much responsible for, you know, bringing the internet as we know it to the world. Okay. He produced the first web server. Without web server, कुछ नहीं होता. सिर्फ emails ही भेज सकते थे हम लोग until 1989. After he created the first web server, we could now transfer hypertext. Hypertext मतलब this thing, मतलब कुछ सर्च करने से ये जो मेरे को information मिल रहा है, this is a hypertext. So this is where the origin of these hypertext transmission came up. ठीक है, the first web servers. And hypertext could be sent over these protocols, TCP. I'll come to it later. अभी थोड़ा jargon लग रहा हूँ. So first web server, commercial internet 1980s में open किया गया. Again here, this is when AOL started, you know, the America Online, 2-3 और services थे जो chatting और basic email sending को ये करते थे. There are still videos in YouTube you'll find people reacting to, you know, internet coming into being from 1970s, 1975. They were also very skeptical about the implications of email. Okay, email maliciously use कर सकते थे लोग. They were thinking because it provided so quick communication. If someone is doing crime in Delhi, New Delhi, then one could and he has some accomplice sitting in Tamil Nadu, they could communicate very easily and take care of the crime. So you know there were privacy reasons and security reasons also because of that. When people were actually talking, they were very, very concerned about what internet could make. But nowadays we don't ask that question. Internet is a part of our daily life. And then NSFNet. NSFNet is actually a service that came up in 1985 that commercialized internet. Okay, and this was what the birthplace of the modern internet, in the sense that an internet backbone was created. Okay, अब backbones क्या होते हैं? I'll come to know. There are companies like Verizon. There's company like AT&T in the Americas. Okay, they are composing Tata Communications also. हम लोग के Tata Communications in USA. They have an internet backbone. Internet backbones are the companies that you know that actually take care of. Yes, now coming back to you know what Aditya said here. Submarinecable.com. We'll come to this. Okay. They actually take care of these cables, internet cables. I mean, people must have already taken a look at this. But okay, I'll come into this. Okay, so history is done. Okay, na? Anything else you want to know? Any questions before I move on to the second section? This is done. Now, this is all I'm going to talk about history. It wasn't exactly brief, but bear with me. Now we'll go to the physical layout of the internet. Yeah, go ahead, Amrit. Do you have anything to ask?
Unmute. Bhaiya, what do you mean by web server? Web server. That's okay. I haven't talked about it. Yeah. So web server is actually something that serves on the web. छोटा से बताया था, ठीक है? It's something that serves from the web. मतलब अगर तुमको man, I don't know. So you go to the restaurant, right? And you have a waiters. You call a waiter. And he's taking your order. Okay. You're sitting here with your girlfriend. This is the table. You watching. Your girlfriend is with the menu because her decision prevails. And you are giving the order to the waiter. तो waiter क्या करेगा? तुम्हारा order लेगा यहाँ पे और वो किचन के रेस्टोरेंट के किचन में जाएगा, है ना? And he will tell the kitchen, he'll tell the chef there to cook this and this. इसको process करके भेजो, ठीक है? वो बोलेगा. So here ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो मैंने line draw किया, this is the internet cable backbone. We'll come to that. Aditya shared the resource. This waiter is kind of, I don't know, let's say this is a browser, your web browser. And this chef who processes the information responds to your request of food. ये जो चीज़ है, and this chef sitting here, he's the web server. Sorry, food server. I mean, sorry, web server. Because I'm talking about backbone and browser. So you got it? You got it right? What web server is? I mean, अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम एक रिक्वेस्ट भेजोगे वेब सर्वर को, वेब सर्वर तुमको वो रिक्वेस्ट भेजेगा. So basically, if I'm saying google.com, this is my request that's going out to the internet. It's hitting the Google servers, the web servers, and then it's responding with the page, the Google search page. समझ गए? तो भैया ये ऐसा है मतलब कि जैसा हम लोग कुछ भी वेब पे कुछ अगर जो हमें चाहिए वो हम वहाँ टाइप करेंगे तो वो जो हमें सर्व करेगा मींस जो भी प्रोवाइड करेगा. Yes, that is वही हुआ सर्वर. हाँ, सर्वर वही सर्व कर रहा है. मतलब वो सर्व कर रहा है, इसीलिए नाम तो वैसा है. It serves on the web. It serves request on the web. अरे AEC का ये क्या था हम लोग का? What was the website ये? AEC का ECWB. ये था. हाँ, यही है. Our college is having a very good infrastructure, very good environment for its students. Okay. I sent a request and AEC का web server responded me with this web page. ठीक है? समझ गए ना क्या web server क्या है? Cool. I'll go to the physical layout now. If anyone has a question, I'll just take the last look at it. Yeah, computer running to provide you the content. Yeah, technically it's the software running on the computer, which is the server. Yeah, that's correct. So spread the contents. Okay. Okay, now moving on to physical layout of the. Oh my shit! 40 minute ho gaya. History. Physical layout of the World Wide Web. Oh my God, this is the biggest. Well. Yes, it follows the protocol. Good thing. Some web servers, the softwares we use to maintain, to actually respond to requests, us backend engineers, we use multi-threading or concurrency. Okay, these are the two concepts that you will study later. Maybe we'll take sessions. GDSC, DevSoc will take sessions. They will explain what multi-threading is, concurrency is. So nowadays हम लोग जो like early computers क्या करते थे, एक बार में एक command को ही उसको process कर पा रहे थे, ठीक है? But nowadays computers are they are multitasking, right? It's a similar thing. So serving each request is a task, and if a computer is multitasking, then it can serve multiple requests at the same time.
Depending on how powerful your computer is, like Google data centers, they can respond to millions of requests in 1 second. ठीक है. AEC का सर्वर बोलो तो मे बी साइमल्टेनियसली वो लोग 30 रिक्वेस्ट ले पाएगा, 50 रिक्वेस्ट ले पाएगा. अगर उससे ज्यादा कर दोगे तो DDoS अटैक हो जाएगा. Distributed denial of service. It's what hackers do. This language, yes. You are calling the waiter. You are talking to him in Hindi, right? मेरे को चिकन बिरयानी दो, वेज बिरयानी दो. So this मेरे को वेज बिरयानी दो, ये क्या है? This is Hindi language. You're sending instructions to the waiter, and this is basically a protocol. Both the waiter and you as a person, you both follow a particular protocol, which is the Hindi language. Hindi language is like a rule which both of you know. You don't know what waiter is going to say. The waiter doesn't know what you are going to say. But the common language between you two is that you both know Hindi, and therefore you can communicate. है ना? यही तो communication का ये हो गया, definition हो गया. So similarly, internet में भी devices वैसे ही काम करते हैं. ठीक है? They follow a particular protocol. If someone is speaking Chinese, obviously you cannot communicate with it, right? With them, obviously, because you only know Hindi, English, and Bengali. For Bengalis here, you cannot talk with people who only know Chinese. So this is also how all web servers do not request to all kind of requests. There are certain web servers who can respond to TCP requests, who can respond to HTTP requests, who can respond to FTP requests, who can respond only to SMTP, who can respond only to POP, who can respond only to IMAP. ठीक है, बहुत सारे protocols हैं ऐसे, but thousands and thousands of protocols are there. Okay. And you can create your own protocol, by the way. Even databases. If you know about databases, people from second year, third year, अगर कोई है तो यहाँ पे MongoDB also uses its own protocol. SQL also uses its own protocol for communicating with the database and sending that data. Okay. Everything has its protocol. Any two applications which are potentially built with different programming languages require an API, and for the API to be able to communicate with each other, they need a specific protocol to follow. एक language चाहिए, language barrier बन जाएगा वरना, है ना? वही protocol, and you have to program a protocol. There are many standard ones out there. Most commonly used are HTTP. We'll be coming back to it. First, let's talk about the physical layer of the World Wide Web. Okay. So physical layer, I'm coming back to this thing. So I need. Okay. So physical layer, it starts with your computer at your home. Okay. It's connected to the let's say a switch. You don't know what a switch is. Nowadays, जो घर के जो routers होते हैं ना, low powered routers. I mean, switches are still used. It's not that they're obsolete. They're actually they're used in a corporate setting nowadays. So this is called a switch. So whenever you need a connection in your home, what you get is a connection from your local ISP. Okay. Let's call it local ISP. Local ISP, anyone knows the name of local ISP? हाँ, एयरटेल एक्सट्रीम, फिर जियो फाइबर. हाँ, जियो फाइबर के जो ये एज सच ये लोकल आईएसपीज नहीं है, दे आर पीओपी सेंटर्स. ठीक है, पॉइंट ऑफ सर्विस सेंटर्स. योर लोकेलिटी, इफ योर लोकेलिटी हैज देन रिलायंस ब्रॉडबैंड. या then there is CT cable, है ना? Does anyone have CT cable Wi-Fi here? माकुड़ा की तरफ बहुत चलता है. So these, so their POP centers, the local POP centers are what your local ISPs are. ठीक है? So now you have your local ISPs. तुम local ISP पास जाते हो, बोलते हो कि मेरे पास एक केबल का कनेक्शन चाहिए मेरे को. ठीक है? So the local ISP gives you a cable. मतलब वो केबल खींच के नियर बाय जो पोल्स होते हैं, इंटरनेट पोल्स होते हैं, वहां से केबल खींच के तुम्हारे घर के पास ला देता है. Now you need to buy a router. Depending on your ISP's plan, you can actually get a router from them. Like in my case, I actually have Airtel Extreme, 50 Mbps का जो speed होता है. So I have that connection, and with that I also got a router with. ठीक है, वो जो I don't know what it's called. GX India. What about the new air fibers and all? Air fibers also. Air fiber, I'm not sure. Air fiber actually uses a telephone satellite connection, right? Yeah, satellite connection.
Not satellite connection. Yeah, it sends a request to nearby mobile towers, है ना? But the same way your SIM uses mobile network जो use करता है तुम्हारा data ये वाला this thing mobile data ये वाला तुम्हारा same protocol is being used by your air fibers. भैया मेरा भी एक क्वेश्चन था पूछो कि ये पहले अगर कोई दूसरे स्टेट जाते थे तो रोमिंग नाम का एक चीज पकड़ होता लेता था था हाँ तो वो दूसरे स्टेट में जाने से डेटा रोमिंग ऑन करना पड़ता था और रोमिंग का अलग चार्जेस लगता था तो वो चीज क्या था बट अब ऐसा क्या हुआ कि अब उसको हटा दिया गया है I don't know man Reliance ने कुछ किया होगा मैजिक ठीक है बट आई एग्री कि देखो ये रेवोल्यूशन जो है ना वो इंटरनेट में मतलब इंडिया में जो इंटरनेट का ग्रोथ था एकदम एक्सेलरेट कर दिया राइट नाउ इंडिया इज द बिगेस्ट यूजर ऑफ इंटरनेट इन द होल वर्ल्ड है ना वो पॉपुलेशन भी तो है पॉपुलेशन भी है प्लस यू नो इट आल्सो मेड इट पॉपुलर 2010 में इफ यू रिमेंबर किसके पास इंटरनेट था कितने लोगों के पास ज्यादा नहीं था एंड मैक्सिमम स्पीड वाज लाइक 500 kbps मैक्सिमम फास्टेस्ट इंटरनेट जिसके पास रहता था मेरे टीचर के पास ट्यूशन टीचर के पास होता था तो वो 500 kbps 600 kbps देता सो अभी बहुत फास्ट हो गया सो वी नॉट टॉक अबाउट रेवोल्यूशंस आल्सो you know mobile networks are entirely different from you know internet cables so I'm not talking about mobile networks so the mobile data that we use on your phones that is through internet the satellites okay satellite comlinks that is different but this ये जो मैं बोल रहा हूँ ना this is actually I'm talking about broadband ठीक है and I want to explain the broadband kind of यहीं से तुम्हारा मोबाइल नेटवर्क आता है I'll tell you how it works So anyway, so broadband आता है यहाँ पे you attach it to a router. You people know what router is. Any more questions? You can just ask while I'm drawing. No भैया Okay. So router and switch. आजकल ये एक combined home router device में आ जाता है. You know, switch and router combined. But let's say your network has more than 3 or 4 computers. Number of computers 500 computers you're running an office so you need a dedicated switch and a dedicated router otherwise it won't work that's why I have drawn 2 modules you might not be familiar with the switch but I'll tell you the function this is the network symbol of switch router का symbol ऐसा होता है router I think like this it's something like this Cisco packet tracer में तुम लोग दिख जाएगा मेरा symbol ठीक है so this is like parallel and this one is like, you know, like a triangle kind of thing so switch का क्या काम है अगर मान लो तुम्हारे कंप्यूटर से तुमको इस कंप्यूटर में you know you have to communicate so when I say communicate na there's a lot of protocol layers that we'll talk about later in this video but bear with me for now I'll be just using lousy words I'm saying communication so when this computer has to communicate with this computer we use a switch okay, switch क्या करता है तुम्हारा पैकेट्स को स्विच कर देता है you know पैकेट्स आर बेसिकली जब भी तुम लोग कोई मीम या फोटो भेजते हो तो वो फोटो को तुम्हारा सॉफ्टवेयर क्या करता है इंटरनेट में उसको तोड़ के छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है फिर उसको ट्रांसमिट करता है ओवर द वायर्स सो that's how these computer will you know break the data and then send it through the wire and then go to and the switch will see acha I told you about IP addresses also so whenever the data is being created each packet will be linked with will be attached with the IP address of your destination device because IP address is basically how we identify devices on the internet right and if this device is online क्योंकि इसको online भी होना है अगर मान लो ये वायर कटा हुआ रहा या फिर वो नेटवर्क इंटरफेस है वो डिसेबल रहा तो it won't work so this device won't have an IP address is only for devices which are connected to the internet ठीक है and there's also one protocol that is taken care of like whenever you connecting to a Wi-Fi या LAN cable through Ethernet to your device तुम लोग देखोगे थोड़ा सा एक कनेक्टिंग का एक ऐसा सिंबल आएगा फिर एक थोड़ा लोड होगा बफर होगा it doesn't connect right away so this process is sometimes called DHCP okay DHCP is a protocol by which you are asking this switch device to give you an IP address मतलब ये बोल रहा है hi I'm connecting I'm new here please give me an IP address and he will say sure here it is whatever you get the point okay
So everyone has an IP address who is online. But अगर तुम online नहीं हो, तुम्हारा IP address नहीं है. As simple as that. That's what I wanted to say. So switch is, like I said, devices on the same network which are connected to the switch can communicate with each other very fast. ठीक है, within the same network, same local network. लेकिन अगर मान लो तुमको बाहर ले जाना है कहीं पे, ठीक है, you want to access google.com, तुम्हारा google.com तुम्हारे बाजू में तो नहीं है. google.com के लिए तुमको अमेरिका जाना पड़ेगा, है ना. So what you have to do is, गोबर कर दिया मैंने इधर. ठीक है, तो यू हैव टू गो टू अमेरिका. तो अमेरिका में तुम जब जाओगे तो अब तुमको पता चलेगा, तुम पूछोगे कि भैया google.com का एड्रेस कैसे पता चलेगा डिवाइस को, मेरे डिवाइस को, है ना. इफ आई एम गोइंग टू aecwb.edu.in, उसका एड्रेस कैसे पता चलेगा मेरे को, है ना. हाउ विल आई नो. तो उसका भी कमिंग टू दैट, डीएनएस अगर तुम्हें को याद है, आई जस्ट spoke from that list. We'll talk about DNS later, but for now just the physical layout. So anyway, we have the IP address of google.com and we are sending it to the switch, the request to the switch. तब switch देखेगा कि ये तो एड्रेस घर के बाहर है, ये तो हम लोग के घर के अंदर नहीं है. तो वो क्या करेगा, उस पैकेट को यहाँ पे राउट कर देगा. Send it to the outside router. ठीक है, outside router क्या है, हाँ, मतलब राउटर को भेज देगा. राउटर क्या करेगा, राउटर का काम ही है उसको कि उसको पैकेट्स को राउट करना. राउट मतलब टू शो द डायरेक्शन. ठीक है. अब पैकेट तो एक डिजिटल एंटिटी है ना, वंस एंड जीरोस, बाइनरी डेटा है. As you all know, that's how information is delivered through wires, है ना. The router will take all that data packet in binary form, and then it will forward it to. It will read the address first. फिर देखेगा कि हाँ चलो verified. This is actually outside the network, so it will, then just forward this to the outside port, to your local ISP. Now your local ISP, इसके बाद भी एक बड़ा layer है. Local ISP is, for example, your local POP service. POP service जो तुम्हारा केबल तुमको खींच के दे देता है, that is your POP, point of service office. तो now local ISP से वो जाएगा regional ISP में. This is the bigger place. So if you are wondering कि ये local ISP बना कैसे है, ठीक है, local ISP also is a big router. It's just a router. It's a big router. ठीक है, वो राउटर ही है, थोड़ा बड़ा है. रीजनल भी एक राउटर है, लेकिन काफी बड़ा है. बड़ा मतलब पावरफुल. ओके, सो रीजनल आईएसपी मतलब बोले तो इंडिया, जियो, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, दे मेंटेन दिस रीजनल आईएसपीज. उनके सेंटर्स अगर तुम ट्राई टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई से वो फालतू yes, भैया बहुत बार सुने हैं इसका नाम. एसएमएस आता है यार, एसएमएस ट्राई का एसएमएस आता है. हाँ. तो उसका जो एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करोगे ना, यहाँ पे रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट में तुमको दिख जाएगा कि कहाँ एग्जैक्टली, आई डोंट नो, आई हैव टू गो थ्रू द डेटा, बट कहाँ उनके सेंटर्स हैं, जियो के सेंटर्स हैं. सर दिस इज ट्राई. यू आल्सो गो टू रिलायंस का वेबसाइट, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन के वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे भी उसके एनुअल रिपोर्ट्स में देखना, एक बड़ा सा पीडीएफ आएगा 100 पेज 150 पेज का. उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा उसके बारे में, कहाँ एग्जैक्टली सेंटर्स हैं, कहाँ ये रीजनल आईएसपीज के ऑफिस हैं वगैरह तुमको मिल जाएगा. Anyway, so okay, now we studied about regional ISP. ये भी एक बड़ा राउटर है. लोकल ISP also एक छोटा सा राउटर, थोड़ा सा छोटा, and then your home router is the कुछ की राउटर, सबसे छोटा जो सबसे क्यूट वाला जो है यहाँ पर. And then regional ISPs are connected to the they are connected to the global ISPs. They are the biggest network routers, global ISPs. They are known as the internet backbone, because these are the people, who take care of your backbone. They are the internet backbone, and they are the ones taking care of all the क्या बोलूं मैं, internet cables throughout the world. Now when I say internet cables, coming back to Aditya here, I'll just steal the link from.
Do you see this? This is actually the underwater cable network. Shortly after ARPA actually created, right? ARPA created the ARPANET, and then this event followed, this particular event, NSFNet in 1985. NSFNet was the beginning of the layout of these cables. Now, mind you, this cable network that you are looking at, this is only the undersea cable network. Okay? Undersea cable, matlab, we actually, internet actually flows through, like whenever you are sending a request from India to google.com, which is in which is in Mountain View, California, right? Data centers of Google. तो वहाँ पे जब request आता है, they are actually traveling through Mumbai, either here, Mumbai, ये वाला, Mumbai, India. They are traveling through one of these cables if they're going to the west. No, if they're going to the Europe. But if you are, if it's going to the US, I think it's taking this path. Chennai, India से साउथ एशियन केबल जो अंडमान, ये तो अंडमान निकोबार का हो गया. दिस इज द फ्लो ऑफ इंटरनेट बाय द वे. अंडमान निकोबार से अगर तुम बोलोगे कि अंडमान निकोबार में तो कोई मोबाइल टावर नहीं है तो इंटरनेट कैसे पकड़ता है? इंटरनेट केबल इज द आंसर. एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इंटरनेट केबल इज, यूट्यूब सर्च कर लेना. दिस इज हाउ इट लुक्स. And under the ocean, deep under the ocean, 20,000 kilometers long, sometimes when it, in case of Atlantic Ocean, Pacific Ocean, very, very, very long wires connecting continents. This is how they look actually. This is all fiber optic, by the way. This is not copper wire. It's a fiber optic. मजा आया देख के? ये देखो. हेलो बोल दो इसको. Anyone knows the difference between fiber optic and ये क्या करें इसको? Copper wires, copper wire transmission. ऑप्टिकल फाइबर में हाँ हाँ बोलो. PIR होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल Total रिफ्लेक्शन. internal reflection, हाँ. The light rays basically bounce back and forth through the walls of the fiber optic. And too fast. Yeah, speed of light transmission है ना. That's why internet is so fast. अगर उनके जगह अगर ये cables, copper cables होते ना, जैसे अभी भी some places copper cables are used for transmission of internet, but generally most of them have been replaced. जैसे Airtel Extreme हो गया, Jio Fiber, sorry, हाँ Jio Fiber हो गया. The fiber in Jio comes from fiber optic. ठीक है. So internet nowadays in your homes you will mostly जो broadband internets होते हैं थ्रू फाइबर ऑप्टिक ही होता है ट्रांसमिशन. वरना अगर कॉपर केबल यूज होता तब तो बहुत स्लो होता था. ठीक है. तो कॉपर भैया तो लाइट से मतलब बिट कैसे ट्रांसफर किया जाता है? ब्रेक कर करके जाता है क्या? 0101 ऐसे? लाइक तो तुम अपने घर के सॉकेट के पास जाना. ठीक है. जो स्विच है लाइट का, जो स्विच है लाइट बल्ब का, वो ऑन ऑफ करते रहना. बस वही है. 10101010. ठीक है. भैया और एक क्वेश्चन था. मतलब क्वेश्चन थोड़ा अजीब है लेकिन मतलब जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो मतलब ISP है. तो अगर कोई और मतलब अगर अलग ISP खोलना चाहे तो वो खोल ही सकता है, जैसे इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्ट होके ग्लोबल इंटरनेट से? नो, देयर आर रेगुलेशंस, सो यू हैव टू कॉन्टैक्ट ट्राई फॉर दैट. They won't just allow you to directly connect. Yeah, basically they won't allow you to directly take out a wire from one of these cables. I mean जब ये केबल निकलता है ना, उसका एक ग्लोबल ISP का एक ऑफिस होता है बहुत बड़ा. वहां से the different ISPs in a country take their connections. भारतीय एयरटेल अपना तार खींचता है, रिलायंस जियो अपना तार खींचता है, ये वो and these wires are they are connected to routers now. Now these routers, some of them go to mobile towers. कुछ जैसे यहाँ पे जो इंटरनेट केबल तुम्हारा आया अंडर द ओशन, वो बाहर निकल के ऑफिस में जाता है. देन दिस इज योर ग्लोबल ISP. दीज आर जनरली मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इंटरनेट. अगर इसको यहाँ पे इसका बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया तो क्या होगा बताओ? इंटरनेट पूरा घर का पूरा कंट्री का इंटरनेट चला जाएगा. ठीक है. इट एक्चुअली हैपेंड वंस इन 2018 while I was actually researching the content for this session last week. I came across an event in 2018 जब ये जो सबमरीन केबल में
Off the coast of Namibia is actually notorious for having a lot of sea pirates. So somewhere in Namibia, किसी ने वो एक केबल काट दिया था. Probably I don't know. It's WASC. I think it's maybe this one, WASC. So they cut this cable, and I don't know. Maybe one of these cables they cut. तो उससे क्या हुआ था ना? East coast of Africa went dark. पूरा इंटरनेट ठप हो गया था 2 दिन के लिए. और बीच में होते रहता है, सबमरीन से कोलाइड कर जाता है. कभी कभी शार्क होते हैं ना, शार्क्स. फिर वो जो बड़े बड़े जो नॉट ब्लू व्हेल्स, ऑर्कास जो होते हैं, दे आर वेरी प्लेफुल क्रीचर्स. दे लाइक टू बाइट ऑन टू वायर्स, जस्ट लाइक डॉग्स. योर डॉग्स विल लाइक डॉग टॉयज. तो वो भी वैसे ही करते हैं, इंटेलिजेंट क्रीचर्स. दे जस्ट गो नियर अ वायर एंड दे स्टार्ट च्यूइंग ऑन इट. So sometimes repairs are needed. Around there are lots of problems that happen with undersea cables, and I told you AT&T, Verizon, Tata Communications, the organizations that maintain these undersea cables, they are the ones responsible for fixing them. Okay? Tata Communications. So if you like hover over these, you'll actually see the company also, and the name of companies also. There's also like people who are here from 3rd year, 2nd year. उन लोगों को छोटा सा बता देता हूँ. जब तुम लोग होस्ट कर रहे होगे ना इंटरनेट, तुम्हारे वेब सर्वर्स वगैरह, तुम देखोगे इधर लाइक मोस्ट ऑफ देम आर सिचुएटेड इन मुंबई, है ना. मुंबई के VPSs तुम लोग देखोगे, जब भी वहाँ पे लिस्ट ऑफ लोकेशंस दिखेगा तुमको, तो क्लोजेस्ट ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट लोकेशन टू योर यूजर्स you should be choosing. So basically you will see Mumbai, India on map, and you will see Chennai on map, nowhere else. This is the reason, because internet cables converge here. This is the opening point. अगर तुम्हारा यहाँ पे रहेगा, so data transmission will be fast. जैसे ही तुम्हारा वो अंदर चला जाता है ना यहाँ पे, तो मोबाइल नेटवर्क ये वो राउटर का झमेला, तो उससे क्या होता है कि बहुत स्लो हो जाता है. ठीक है. सो मुंबई एंड चेन्नई इज योर क्लाउड प्रोवाइडर का फेवरेट लोकेशन. तुम AWS बोल दो, Amazon Web Services, Google Cloud, all of these centers, all of them have their data centers here in Mumbai and Chennai. भैया, हाँ बोलो. तो जैसे आप बोले कि गवर्नमेंट मेंटेन करता है, लेकिन अगर फिर भी कोई एक्सेस अगर किसी को मिल गया केबल का डायरेक्टली, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा ना, अगर वो कर पाया तो? हाँ, प्रॉब्ली. मतलब मेरे को भी नहीं मालूम एग्जैक्टली कैसे होता है, बट हाँ, यू हैव टू समहाउ गेट इनटू दैट ऑफिस एंड कनेक्ट टू द इंटरनेट फॉर फ्री. इधर जाना पड़ेगा, जाके चोरी करना पड़ेगा. यू हैव टू टेक अ स्मॉल पोर्ट, यू हैव टू कनेक्ट योर घर का केबल एंड देन yeah, you start scrolling through Instagram. That's how it works. Maybe, I don't know. Okay, yeah, maybe it's possible. That's how. But these are actually for widespread application. But each of these outlets, they have like 5 Gbps, not 5, much more. 50 Gbps, 100 Gbps का speed limit होता है इन लोग का. Gbps, very fast internet. क्योंकि obviously they are serving the internet. हाँ, बोलो. डेटा क्या होता है जो मतलब डेली मिलता है फोन में से, एक लिमिट रहता है, तो वो हाँ, वो लिमिट दे आर एक्चुअली, यहाँ पे लिमिट नहीं होता. वो लिमिट तुम्हारा सेट होता है विद इन. देखो ये जो केबल यहाँ से आया ना, अब ये अंडर सी होके ये टेरिटोरियल हो गया केबल. अब यहाँ पे केबल खींच के जो तुम्हारा रीजनल ISPs होते हैं, जैसे जियो हो गया, भारती एयरटेल हो गया, वो लोग वो डेटा ट्रांसमिशन का ये करता है. मतलब they are paying a fees to Tata Communications, for example, whoever is maintaining this cable. If they are taking from Tata Communication cable, then they have to pay a fee to Tata Communications. But now if they are let's say but उन लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा? They have to take from customers, है ना. So they have to pay Tata Communications for taking service of these cables, and you have to pay Jio and Airtel for your internet users, because ये जो वहाँ से वो केबल खींचता है और वो mobile towers से they create mobile towers, they connect the cable with mobile towers, and that's how the mobile towers through satellite dishes it reroutes the traffic from your mobile phone to the tower and so on and so forth wirelessly. ठीक है. तो तुमको तो कुछ तो फी चार्ज करना पड़ेगा, है ना. Otherwise how will they pay Tata Communications? So if you are opening an ISP, let's say you are a you're a big guy, you have lots of money, you want to open Geo 2.0. Okay. So you have to probably ask permission from TRAI. You have to approach one of these centers. You have to pull your own cable. You have to set up mobile towers. You have to connect those mobile towers with the label with the cable you pulled, and that should do it. I'm just saying it's not simple, but this is the the gist of it. I also don't know exact process, but yeah.
I mean try is your gateway. ठीक है, this is how it works. ये मैप देख के मजा आया? Did you know this? Undersea cables, internet actually travels through under keys. मतलब ये जो देखो the problem क्या है ना कि मान लो we have our planet है ना, our planet is round. The problem with totally wireless communication, I mean, you might be asking why optic cables? Also, we can use microwaves, radio waves to transmit data from satellite from one location to another. But because our Earth is circular, there is a lot of engineering problems here. Let's say you have a certain height of your mobile tower. You know? मतलब your mobile tower does not go beyond that. तो mobile tower ठीक है. So you have to put satellites everywhere. That is one problem. Plus satellites, क्योंकि सैटेलाइट अगर यहाँ पे नहीं रहा, मान लो ये वाला सैटेलाइट नहीं है, there's a satellite here, ये भी नहीं है. You have to send information like this. और एक प्रॉब्लम होता है with radio waves, with any क्या कहते हैं, low frequency EM waves, they have a problem. मतलब जितना तुम्हारा रिफ्रैक्टिव लेयर बढ़ेगा ना, this is Earth's atmosphere, तो रिफ्रैक्शन की वजह से और जितना तुम्हारा क्लाउड कवरेज, जितना तुम्हारा एटमॉस्फेयर कवर करेगा, उतना लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पे इन दिस केस इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट इधर during transmission. So it has to be as direct as possible. Mobile networks, mobile towers से ऊपर. So that is why just because we have our own telecom satellites just on top of India, you know, we don't use the geostationary satellites of, let's say, Thailand, or we don't use that of US, because that is not possible. US का satellite उल्टा तरफ है, यहाँ पे satellite है. So how will we use this? So sending information from satellite to satellite to satellite to satellite like this, it's very hard. I mean, it's pretty messy. Easier is, you know, through the use of through the use of light and cables. Immediately, speed of light transfer हो जाएगा एक point से दूसरा point of our planet. So that's why, you know, we use cables. And whatever internet you use, the mobile data वो भी ultimately वो undersea cable ही use करेगा और कुछ नहीं. ठीक है? They ultimately use the undersea cable. But that is being you know, taken care of your ISP. ISP वायर खींच के वो टावर बनाता है, उसके बाद उसको इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है. And it charges free for usage. Okay. Now तुम लोग को स्ट्रक्चर पता आया क्या? थोड़ा बहुत रीजनल ISPs वगैरह, सारे राउटर्स क्या क्या होते हैं, स्विच क्या होता है. स्विच एंड राउटर्स आर दी टू मोस्ट. हाँ, बीच में ये बूस्टर्स भी होते हैं. डू यू नो बूस्टर्स? एनीवन नोज अबाउट बूस्टर्स? सिग्नल बूस्टर्स बता ही दिया मैंने. इधर बीच में बूस्टर्स भी होते हैं, बिकॉज वो जो ऑप्टिक फाइबर का जो ट्रांसमिशन ये होता है ना. डज एनीवन नो व्हाट बूस्टर्स आर? रिपीटर. हाँ, रिपीटर. यस, मजा आ गया मैं देखी. प्लान कैंसिल फिर. रिपीटर जो होता है वो क्या करता है, वो जो फाइबर ऑप्टिक का डॉट 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 1010 होता है ना, वो बहुत फेंट हो जाता है ओवर सम डिस्टेंस. तो बीच में वो रिपीटर्स होते हैं. बीच में वो रिपीटर क्या करता है, वो सिग्नल को बूस्ट कर देता है. मतलब बेसिकली वो लाइट का जो इंटेंसिटी है उसका, यू नो, बैटरी लो हो जाए तो क्या होता है, टॉर्च का बैटरी जब लो हो जाए तब वो लाइट थोड़ा फीका हो जाता है ना, फिर नया बैटरी जब लगाते हैं एकदम चमकीला हो जाता है. बस वही चीज है. रिपीटर क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है बीच में. सो यू नीड रिपीटर. दिस इज वन प्रॉब्लम विद यू नो ऑप्टिक फाइबर. बहुत ये हो जाता है. इंटरनेट, इवन दो देयर इज सम इंटरनेट, टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन होता है, बट इन सम केसेस, यू नो, the energy is lost because there is air molecules here, so they get energized. Chemistry. So they absorb the energy. Total internal reflection से तुम्हारा मतलब लाइट का लॉस नहीं हो जाता, बट बिकॉज ऑफ द, यू नो, मीडियम का इंटरफेरेंस, ये जो मीडियम है, the air molecules, that's why the intensity decreases. Okay. These are actually problems that we deal with in ECE. यही काम है उनका. फिजिकल लेयर ऑफ द इंटरनेट, इसको टेक केयर करना. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, ये समझ में आ गया थोड़ा बहुत. कितना, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल? 54 कांस्टेंट. नाइस. ओके, सो
You got to understand थोड़ा बहुत gist आ गया, समझ में आया? किसी को किसी questions पूछना है? I'll move on to the third topic now. Now I'll go to protocols. I'll dig a little deeper into what protocols are. So, does anyone have questions? Anything? How can we save our data cables from solar flares? Solar flares, data cables from solar flares. Prevented till it. No, I mean light is in classical physics. Light is the fastest medium. So I mean, sorry, not medium. Light is the fastest. Photons are the fastest objects in the universe. So how do you transmit data faster than that? I don't know. Maybe in the future, 50,000 years, 100,000 years afterwards. How can we save our data cable from solar flares? Solar flares, no, no. Our Earth protects us from solar flares. So anything under the atmosphere, anything under the troposphere, you are safe. Solar flares are only a space problem. They're not an undersea problem, or you probably mean sunlight. Because sunlight से कभी-कभी होता है बहुत गर्म हो जाते हैं तो sometimes melts. Is that what you're talking about? Solar flares are different. Anyway, I will move to the next topic. Internet protocol, IPv4, IPv6. Okay. So I was talking about how the internets are labeled, right? So you have IP addresses. Now I'll be coming into core computer science. Okay, this is nothing about electronics or communication. This is core computer science now. Now, TCP/IP protocol is the one de facto protocol we generally use for communication on the internet. There can be others. Okay, there can be others. So I will show you the OSI model. एक layer में तुमको दिखाऊंगा, ठीक है? So OSI model जो तुम लोग का थर्ड ईयर में आने वाला है सिलेबस में. So OSI model में तुमको different layers दिखेगा यहाँ पे, ठीक है? At the top you have the web browser. It's the application layer. These are different layers. This is how your information travels to the internet. सबसे ऊपर application layer हो गया, मतलब तुम application से interact कर रहे हो, तुम Zomato में खाना ऑर्डर कर रहे हो, Swiggy में खाना ऑर्डर कर रहे हो, Facebook में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो. Okay, you are registering for JEE, NEET, JEE NEET. You are talking with someone on Facebook. You are searching something on Google. Everything is happening in this application layer. And what is the application in this case? In my case here, this is a browser. There can be other applications. Swiggy, Zomato, वो लोग browser नहीं है, but they are still applications. ठीक है? So they come under the application layer. उसके बाद next layer होता है presentation layer. This is actually very in depth. So I have to talk about encryption. What encryption is and how data is represented in form of packets and stuff. So I'll come to that later. But this is how your information travels through one layer after the other. And so this TCP/IP thing, right? यहाँ पे protocols के नाम दिख रहे तुम लोगों को. So TCP is a part of the transport layer. ठीक है? And IP से ICMP. These are all protocol names by the way. POP, email, SMTP, Telnet, FTP, P2P, DNS. DNS also उसका भी domain. उसका भी एक ये है protocol है. DNS resolution protocol. So these are all protocols. The rules followed by two different devices to communicate with each other. ठीक है? The transport layer में TCP यूज होता है and network layer में IP यूज होता है. Physical layer मतलब हो गया तुम्हारा वो modem वगैरह. ठीक है? Modem नहीं, wires, optic fiber and stuff. Application is like topmost. फिर बीच बार में वो router, MAC addressing ये सब आता है. End-to-end connections and reliability. This is also part of TCP. Yeah, TCP takes care of this. And let me not talk about OSI model. This is going to be it's going to take a long time. Okay. Okay, coming to TCP/IP. So TCP/IP, मैंने बताया, these two are also protocols. Right? Protocols are different tools that we use to communicate with the internet. But the IP part of TCP/IP is actually the rules associated with addressing of computers. Okay. Addressing of computers. There's a lot of concepts, but basically मैं IP address का ही बात करूँगा. In later sessions, maybe we'll talk in depth about how everything works.
लार्ज स्कोप। आईपी एड्रेस क्या होता है, बोलो कोई, अभी बताया मैंने। हाँ यार, फॉर ईच डिवाइस इन द नेटवर्क ना। आईपी एड्रेस का 2 वर्जन है, बताओ किसी को मालूम है? ओनली फ्रेशर्स प्लीज, सेकंड या थर्ड ईयर मत बोलो। भैया पब्लिक और प्राइवेट। Oh, nice. Public private. Yeah, public private होता है, but I'm talking about 2 versions of IP. मतलब there are 2 versions of IP. अच्छा, हाँ, IPv4 और V6 है वो। yeah, IPv4 and V6. IPv4 and V6. Right. So IPv4 looks, it's actually a 32-bit address, and IPv6 is 128-bit. The problem with 32-bit is 32-bit मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेटोरियल्स लगाओ तुम लोग। 32-bit मतलब what is bit? बिट मतलब बिट बाइट फ्लैशेस। बिट मतलब है वो 0 1 जो क्या या 1 and 0, these are 2 bits है ना, इन बाइनरी सिस्टम। हम लोग को बिट्स कहते हैं इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में। तो 32 बिट्स मतलब 32 वंस और जीरोस है ना। यहाँ पे 8 हो गया, this is 8 and then you make it repeat 4 times, ठीक है। So you know right how the IP address looks. This is 1 byte by the way. 8 bits is 1 byte. Anything. अब समझ में आया ये डॉट्स क्यों होते हैं? हाँ, what are the dots? सेपरेटर टाइप का। हाँ, it separates the bytes basically, ठीक है। एंड IPv6 कैसा दिखता है? 128-bit एड्रेस, मतलब सेम चीज है, ऐसा ही है, बट ये जैसे 4 गो है ना, उसका होता है 16 गो। दिस यूनिट 16 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। Oh my god, 16 हो कि 17 हुआ? Anyway, this is long, pretty long. कोई बता पाएगा कि क्यों IPv6 बना, IPv4 क्यों नहीं बना? मतलब why did we make an IPv6? Why not V4? शॉर्टेज पड़ रहा था भैया आईपी एड्रेस का। किस चीज का? हाँ, IP एड्रेस का। Why? How? Can you explain? बहुत सारा डिवाइस, मतलब आप अब तो इंटरनेट बहुत बढ़ गया है ना, तो इसलिए शॉर्टेज पड़ गया था IPv4 एड्रेस का। हाँ, मतलब can you mathematically explain it using combinations? Can you justify? क्यों शॉर्टेज पड़ रहा था? How do we know शॉर्टेज पड़ रहा था? वो फॉर्मूला याद नहीं है भैया, कुछ पावर टू दी एन लगता है तो उसमें। नहीं, फॉर्मूला कुछ बात नहीं है। देखो ये जैसे 32 बिट हो गया ना, 32 बिट है, इसका मतलब क्या? 32 बिट मतलब इधर इट कैन बी 1 और 0 है ना। मतलब योर बॉल कैन इधर बी ब्लैक और इट कैन बी रेड। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस डू यू हैव? BR, BB, RR and RB. How do you find the total number of combinations? 2 power n, है ना। मतलब हाउ डू यू मतलब कैलकुलेट दिस? मतलब इसका 2 पॉसिबिलिटी है, इसका 2 पॉसिबिलिटी है, इसका 2 पॉसिबिलिटी है। ए डोंट फॉरगेट मैथ्स, ये सब लगेगा। इसका 2 पॉसिबिलिटी है ना। एंड देन यू मल्टीप्लाई देम। सो इफ आई मल्टीप्लाई देम 32 टाइम्स, मतलब क्या? रेज टू द पावर 32 है ना। सो इफ आई कैलकुलेट what raised to the power 32 is, this is the number. So if I write it nicely, तो ये हो गया तुम्हारा 4 भाई 1 2 how many? 4 billion, right? And how many? What is the population of Earth?
Can you tell me? Population of Earth, human population. 8 billion. जानवर नहीं लोगे. अभी तो 7 बिलियन है शायद. You're not updated, bro. 8 billion. 8 billion. अभी 8 क्रॉस कर 8.1 है. No, 8.1 नहीं हुआ. Something like that, yeah. We recently ठंडा है crossed. कारण. हाँ. And India is the most populous country in the world right now. People tell यार me. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत चलता है इसी कारण. Naughty one, right? No, but I'm saying, I mean, there are speculations that Indian population will not go beyond 10 billion. So anyway, so 8 billion, there are people, and everyone, literally everyone, and most of the people, let's say everyone owns 2 devices. So easily, not everyone, let's say 1 billion people have access to the internet. Then let's say how many people have access to the internet? So ask Google. How many people access internet? Or let's look at charts. So in charts, we'll know better. Okay, so 5.25 billion people use internet worldwide. ठीक है? और number of IPv4 addresses कितने हैं? कितने हैं? 4 billion. So if so many people are connected, so many people, I mean this is people, and everyone has a laptop and a phone, तो सोचो क्या होगा? है कि नहीं? It's a huge number. Obviously वो क्रॉस कर जाएगा IPv4 के स्कोप से. उस टाइम उतना पॉपुलेशन ज़्यादा था नहीं. 2000 in the year 2000, I think इंडिया में ही the 2 billionth baby was born in the year 2000. Correct me if I'm wrong. Maybe I'm wrong. But yeah, something like that. So 2 billion 2000 year 2000 में ही नया millennium में ही I think there were like 2 billion population. In the last 15 years, in the last 20 years, there has been like explosive growth in human population because of better healthcare, obviously. Better healthcare, better communication. Internet के वजह से, believe it or not, ठीक है? Internet has changed our lives for the best. ठीक है? There are more pros than there are cons of the internet. Thankfully. Not what people suspected in 1970s. So because of that, we are actually adopting an IPv6 address. So IPv6 मैंने बोला कि 128 bits होते हैं, है ना? Haha. You can see this, right? Now you might be asking कि why 128? Oh my god. 128 क्यों? इतने सारे devices. कोई बोल पाएगा? I mean, someone could do 64. 64 would have been nice. Not a huge number. Why 128? It's actually a very sweet reason. Do you know why? Maybe it's the limit. Because this was kept in mind. This was done keeping in mind the dream of humanity to be multi-planetary civilization. ठीक है? तो उसमें क्या होगा? 8 billion तो हम लोग के planet में है. What if we colonize Mars? What if we colonize other planets in the solar system? In that case, we will definitely need unique addresses for each device, and in which case we will probably need more devices, more IP addresses. So this is a huge address that probably no one, जिसमें अंदर conflict नहीं होगा. ये तो conflict का possibility है ही नहीं. तुम लोग पूछोगे कि एक क्वेश्चन आएगा कि even though like IPv4 is such a bad scheme, only 4 billion devices are supported, how are we not running out of IP addresses? If there are, I mean, we're still using IPv4, right? We're still using IPv4. Do you know if how many people know here what? Okay, no, I'll show you. ठीक है, google.com का IP एड्रेस जानने के लिए this is a command in in Mac OS. Linux and Mac OS you use, so it will give you the IP address of google.com के servers. ठीक है, now if I'm copying this, I'm going to my browser, I'm pasting it here. ठीक है, अगर I'm hitting enter, तो क्या लगता है क्या होगा?
Can you tell me? गूगल ब्राउजर ऑन हो जाएगा। हाँ ठीक है, बस redirect google.com खोल गया। So so people are, I mean, you just saw we are still, I mean, Google is using IPv4, right? This is 32-bit address. This is not an IPv6 address. Do you know how IPv6 address works? Geo uses IPv6 address. If you do, अगर तुम अपने phones में जाके what is my IP लिखोगे, so this will probably be a, this is my IP, this is my public IP address. So if you do this on your phone, you will probably, if you are connected to Geo, I don't know what Airtel, Geo is actually using IPv6 for mobile phones. IPv6 is more preferable क्योंकि बहुत सारे mobile phones हो गए आजकल, and mobile phones are capable of independent mobile data access, है ना? वो लोग mobile data independently on करके they can access internet. So it's like one device for each, one address for each device. So it only makes sense to have, you know, IPv6 because अभी तो आजकल तो लोग people, one family of 4 people owns you know, like 6 devices. भैया ये IPv6 में वो FFCC ये सब क्या होता है? It's hexadecimal. Oh yeah, I'll tell you. These, right? These letters. So so IPv6 you just saw, right? It's so big. So if we try to represent this, like how many did I tell? There are 16, right? If I do this, so I told you there were 16. This thing, 16 numbers separated by dots. So it would have been really messy, है ना? याद करने में भी दिक्कत होगा। और इतना नंबर अगर आईपी एड्रेस ही ले लिया तो इसके राइट में अगर मैं सर्च करूंगा कुछ कैट फोटोज मतलब यूआरएल तो मसी नहीं हो गया थोड़ा? It's messy, right? It's extremely messy. So to make them short, we utilized, just for IPv6, we utilized the octet. Sorry, not octet. Hexadecimal number system. So ये जो F, C, E ये सब जो देखते हो, they are actually hexadecimal numbers. So basically what we do is we combine hexadecimal numbers. क्या होते हैं भाई, कोई बताओ? Hexadecimal numbers, binary system, decimal system, octal system, hexadecimal system. Hexadecimal क्या होता है? उसका base कितना है? Anyone? 16. What is the base of hexadecimal? 16. 16. 16 मतलब base मतलब क्या? मतलब there are basically 16 numbers, right? 16 digits. 5 all the way up to 0 to And 9 A2 and S. A to F. A2 S. हाँ A to F. तो अगर तुम काउंट करोगे तो ये 16 होगा, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस IPv6 एड्रेस में हम लोग ये 4 यूनिट्स को मर्ज कर देते हैं, ठीक है? मतलब each of this number, each of one hexadecimal number, one hexadecimal digit actually represents 4 bits. ठीक है, 4 बिट्स। बोलोगे कैसे भैया? कैसे बताता हूं। ये हो गया 1 0, ये हो गया 1 बाइनरी का नंबर्स, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना? और ये हो गया 5 6 कैसे? ऐसे 7 कैसे? ऐसे, ओके। 8 कैसे? ऐसे। So if you count from 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 0 से 7 तक कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में? 8 कॉम्बिनेशंस, है ना? Oh no, sorry. Actually, this is also included in IP address.
Oh, sorry, 4444. One unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit. Oh shit, या सॉरी ये एक्चुअली क्या होता है कि 4 बिट्स होते हैं ना, मतलब एक हेक्साडेसिमल डिजिट तुम्हारा क्या होता है, 4 बिट का होता है, मतलब you could represent this number, right, as a hexadecimal digit. ये क्या होगा बोलना, f 1111 is f, ठीक है. So if I continue the numbers, here, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया, sorry, ये हो गया, oh my god, ये हो गया 9, 10, so hard to count in binary. क्या गूगल कर लीजिए ना, अपना क्या लिख रहे हैं 1 to 16 बाइनरी नंबर. यार सही बोले यार. Uh, 0 to 15. Thanks. Okay. So anyway, तो हम लोग यहाँ पे जैसे बता रहे थे कि ये जो है ये एक लेटर है ना, अगर मान लो ये एक लेटर हुआ, मतलब ईच यूनिट इज, ये हर एक यूनिट तुम्हारा 2 लेटर हुआ, ये 2 लेटर, ये 2 लेटर, ये 2 लेटर, लाइक दिस इज एफ एफ, दिस इज ऑल्सो एफ एफ, दिस इज ऑल्सो एफ एफ, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो लिस्ट में तो दिस इज 15 इज द लास्ट नंबर, एफ इज रिप्रेजेंटेड 1111, है ना. और अगर डायग्राम हम लोग जो डायग्राम बनाए यहाँ पे अकॉर्डिंगली, वो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा एफ हो गया और ये तुम्हारा एफ हो गया, मतलब यहाँ पे 2 लेटर्स हो गए, तो यहाँ पे एफ 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 करके करके ऐसे करते करते कितने लेटर्स में बताओ ना. दिस इज हाउ मेनी आर हियर, दिस इज 4 and this is 16, so basically 2 times 16, 32 hexadecimal letters. This is the conclusion that I wanted to teach, 32. So if you look at any IPv6 address, you'll see there are 32 letters here. Okay. And each four units are separated with a colon. Okay. Oh wow, they are also represented this, see नीचे यहाँ पे binary form भी दे गए हैं, ठीक है. समझ में आया ना representation IPv4 IPv6. And then there's also another interesting thing. So if you see IPv4 जैसे हम लोग for second and third years here 192.168.0.1 ऐसे, फिर हम लोग पोर्ट कैसे डालते हैं बोलना, पोर्ट, हाउ डू मेंशन द पोर्ट, ऐसे है ना, एक कोलन डालते हैं, फिर कोलन पोर्ट नंबर डालते हैं. सो इन IPv6 वो डबल कोलन होता है. Second and third years only, they will understand. I come to port number later. So हो गया ये. So IP protocol समझ में आ गया, IP address क्या होता है, how computers are addressed here. Any question before I move on to, let's say, IP address हो गया, IPv6 हो गया. भैया हाँ बोलो. हम लोग का मतलब एड्रेस IPv4 रहेगा या V6, मतलब कौन डिसाइड करता है, ISP या राउटर? Yeah, your ISP decides. मतलब in case of mobile data, it's your ISP deciding. So there are two. Someone just said there are 2 types of addresses, right? There is public and there is private.
है कि नहीं? हाँ। Is the difference? कोई किसी को मालूम है? पब्लिक भैया शायद हम लोग को जब जब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तब मिलता है एक ठो, और प्राइवेट चेंज नहीं होता है, वो रहता है। Yeah, kind of. बट होता क्या है? हाँ सही बोले, वैसा ही होता है, बट होता क्या है वो? सो इफ यू हैव लेट्स से सो जस्ट मैंने एक डायग्राम बनाया है ना, ये राउटर हो गया, ये स्विच हो गया। लेट्स से घर का राउटर है, तो स्विच आई विल नॉट ड्रॉ, स्विच इज अ पार्ट ऑफ द राउटर हियर। यहाँ पे तुम्हारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, दिस इज योर लैपटॉप, दिस इज योर फोन, ठीक है, एंड राउटर इज कनेक्टेड टू द आईएसपी, राइट। तो जब तुम्हारा राउटर तुम्हारा आईएसपी से कनेक्ट होता है, तब आईएसपी राउटर को एक पब्लिक आईपी एड्रेस देता है, पब्लिक आईपी एड्रेस। और जब तुम्हारा डिवाइस राउटर से कनेक्ट होता है, तो राउटर तुमको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस देता है, सॉरी हाँ, प्राइवेट आईपी एड्रेस देता है। क्या लिखा है? समझ में आया क्या? The IP address that you get from your routers, that is actually your private IP, and that your router gets from your ISP, that is the public IP. तुम बोलोगे ऐसा क्यों? ये तो अजीब लग रहा है मेरे को सुनने में, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ये भी समझाने में आएंगे तो एक्चुअली होता क्या है ना, इसको NAT कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। So I'm thinking like how to go ahead. I still have the client server architecture to show you. और एक सेशन ले पाऊंगा? तुम लोग आओगे? हाँ भैया। नेक्स्ट डे तब मैं उस टाइम, सो फ्रॉम दैट डे आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्राउजर, ये जर्नी ऑफ अ वेब पेज, डीएनएस रेजोल्यूशन वगैरह से स्टार्ट करूंगा फिर। So, इतना तक, आज इतना तक ही 9 बजे यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक, मतलब एक एक बात करने में बहुत टाइम लगता है। सो NAT is also going to be very long. Maybe this will take 3 sessions. Let's see how much I can cover. So public IP and private IP. तो क्या होता है ना, ये private IP, लेकिन तुम लोग एक टेस्ट करके देख सकते हो, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक फोन है, मम्मी का फोन, हम लोग का फेवरेट टारगेट फॉर व्हाट? हॉटस्पॉट, राइट। मम्मी के फोन पे तुम हॉटस्पॉट ऑन किए, ठीक है, और यहाँ से तुम अपना लैपटॉप चला रहे हो क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपना डेटा खत्म कर दिया है इंस्टाग्राम चला के, और तुम्हारा खुद का भी एक फोन है, वो भी तुम चला रहे हो मम्मी के फोन से, ठीक है। तुम्हारा मम्मी का फोन जो है वो एक राउटर बन गया, बिलीव मी, इट्स एक्चुअली अ राउटर, ठीक है। तो जब तुम हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हो, तुमको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगा, ठीक है, एक प्राइवेट एड्रेस मिलेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस। और सिंस तुम्हारा फोन आईएसपी से कनेक्टेड है मोबाइल डेटा से, सो योर आईएसपी विल गिव योर फोन अ पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। लेकिन देयर इज अ कैवियट, व्हाई द डिफरेंस, क्यों अलग क्यों? Because I told you, right, like because there are so less IP addresses, right? There are so many, only there are 4 billion IP addresses with IPv4, and majority of our internet, like 30%, only 30 or 20% of our internet, I don't know exact percentage, something around 20%, 20-30% has only switched to IPv6. IPv4 पे अभी तक कोई गया नहीं है, ठीक है। तो IPv6 ही 20% है, और बाकी 80% है वो IPv4 है। तो जब हम लोग पब्लिक आईपी हम लोग को मिलता है, लेट्स से IPv4, जब भी हम लोग मोबाइल डेटा से कनेक्ट करते हैं, सो आवर आईएसपी एक्चुअली गिव्स, सिंस वी आर ऑन फोन, आवर आईएसपी गिव्स बोथ IPv6 एंड IPv4, दोनों एड्रेस हम लोग को मिलता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द सर्विस वी आर ट्राइंग टू रीच, मान लो गूगल का सर्वर हुआ, या स्विगी का सर्वर हुआ, जोमेटो का सर्वर हुआ, डिपेंडिंग ऑन विच IP एड्रेस, विच IP वर्जन दे सपोर्ट बेटर, वी विल यूज दैट पर्टिकुलर IP एड्रेस, ठीक है। मतलब मेरे घर का एड्रेस 2 है, ऐसा मान लो, ठीक है। 2 टाइप का एड्रेस है मेरे घर का, उस टाइप का मान लो, एक हो गया छोटा एड्रेस, एक हो गया लंबा एड्रेस। तो अब जो भी पोस्टल सर्विस जिसको अच्छा, मतलब whichever postal service prefers, whichever version the postal service prefers, that one only you will mention, है ना, in your packets. So that's how you can switch between IPv4 and IPv6. Now if I can show you, like on my phone, I can actually show you that. So let's say
I turn off my Wi-Fi. ठीक है. Okay, I can show you this one first. So एक चीज बता दो तुम लोग को. तो ये राउटर वाला मैंने बताया कि पब्लिक आईपी है. तो ये पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी अलग क्यों है? Since there are less number of IP addresses, anything behind a router है ना, any device behind a particular home router, all are considered as a single public IP. ठीक है. Let's say there are 5 devices behind this router. Particular router है, तुमको दिख रहा है, R लिखा हुआ है. This one. This has 5 devices connected. पापा का डिवाइस, तुम्हारा फोन, मम्मी का फोन, दीदी का लैपटॉप, 5 डिवाइस है. ठीक है. सो यू आर कनेक्टेड टू द राउटर. नाउ द राउटर जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा ना गूगल को, तो मालूम उसमें एड्रेस किसका होगा? तुम्हारा प्राइवेट आईपी नहीं होगा. वो अपना, तुम्हारा प्राइवेट आईपी को चेंज करके वो अपना पब्लिक एड्रेस डाल देगा. ये जो राउटर है, ये पब्लिक आईपी जो उसको मिला, वो वहां पे डाल देगा पैकेट्स में. ठीक है. तुम बोलोगे क्या प्रूफ है भैया? एनीवन वांट्स टू सी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दिस? हाँ भैया. yes. ओके, यस. ओके, लेट्स ट्राई. सो ये जो मेरा फोन है, अभी मेरा ये जो वाईफाई दिख रहा है तुम लोगों को, दिस इज कनेक्टेड टू द राउटर. सेम राउटर एट मैं हूँ. ठीक है, एयरटेल एक्सट्रीम. और एक तुम्हारा ये जो मेरा लैपटॉप है, ये भी कनेक्टेड है. एयरटेल कांचकोला मतलब कच्चा केला. सो लेट मी शो यू. सो आई विल सर्च यहाँ पे इन गूगल व्हाट इज माय आईपी. क्या लिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? You remember this number, okay? Note करो. यहाँ पे मैं लिखूंगा what is my IP. See, both those devices, मतलब ये दोनों जो डिवाइस है, they are connected to my router. What is the point of IP addresses? To uniquely identify two devices, but see, they have the same address. Why? Can someone explain from second year, third year? सेम ही राउटर से कनेक्ट है, इसी कारण. हाँ, kind of. আমি একটা explanation Not দেবো, as. জানি Not না as. ঠিক হবে কিনা. হ্যাঁ, বল না বল. মেনলি যেহেতু একটা লোকাল ল্যান্ডের সাথে সবকটা ডিভাইস কানেক্টেড আছে, আর যেহেতু ফিজিক্যাল ডিভাইস, ওর একটা রাউটারের মধ্যে তো এমএসসি অ্যাড্রেস বা ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস দিয়ে পরে ডিভাইস ডিটারমাইন হবে, রাইট? একটা যেহেতু সেম প্লেসে আছে বা একটা সেম রাউটারের সাথে কানেক্টেড আছে, আর রাউটার যেহেতু আমাদেরকে আউটার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট করে. হ্যাঁ, ঠিক. মানে তো ওই আর কি, आईपी एड्रेस যদি সব করা ডিভাইসের একটা করে দিয়ে দিই, इंडिविजुअल आईपी एड्रेस सबको दे दे IPv4 वाला, तो दिक्कत हो जाएगा भाई. हम विल बी आउट ऑफ आईपी एड्रेसेस. मतलब इतने सारे डिवाइसेस है फोन में, बिकॉज दिस, इसी को NAT कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. ठीक है. बिकॉज द रीजन इज, you know, since we have a router and since all the devices behind the router sharing the same router, so what is the point? I mean, router, ये जो हम लोग का राउटर है ना, ये बड़ा एक स्मार्ट डिवाइस है. ये राउटर क्या देखता है कि so whenever you are sending a packet to the router, let's say this is your device, this is the laptop, this is your router, this is your ISP. So whenever you're sending a packet, right, to your router, तो राउटर क्या करता है ना, राउटर देखता है कि इस डोमेन से, ठीक है, लेट्स से यू सर्च फॉर google.com, तो राउटर दिखेगा google.com तुम्हारा. सो आई टोल्ड यू राइट, ईच डिवाइस विल हैव अ प्राइवेट आईपी एड्रेस. लेट्स से यू हैव योर प्राइवेट आईपी एड्रेस. तो राउटर को दिख रहा है कि हाँ, इस पर्टिकुलर प्राइवेट एड्रेस है. हाँ, और प्राइवेट आईपी एड्रेस डिफरेंट है. इस डिवाइस का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इस डिवाइस का जो प्राइवेट एड्रेस है, वो अलग है. लेकिन ठीक है, आई कुड शो यू. हाउ डू आई शो यू? फोन में, ओह शिट, मेरा आर्च लिनक्स नहीं है. आई कैंट शो यू माय प्राइवेट आईपी ऑन फोन. ओह या, एक्चुअली आई कैन. Oh yeah, do you see INET 6? This is what
This is what my Geo has given me. This is my INET 6 address, IPv6 address, and IPv4 भी है. Oh, this is dummy 0 here. ये नहीं. Yeah, INET 6 address, and this is my INET address. ये मेरा प्राइवेट एड्रेस है, मतलब दिस इज माय फोन्स प्राइवेट एड्रेस. ठीक है, मेरा फोन और मेरा लैपटॉप दोनों कनेक्टेड है. You all know, right? Android is Linux, so they can handle same commands. This is my Android's terminal. This is my Linux terminal. ठीक है, मेरा Linux का प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया ये. आ गया भाई, ये हो गया 1.6 and my phone's IP address is 1.3. ठीक है, they have different private addresses but they have the same public address. लेकिन योर राउटर विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ दैट. तुम्हारा राउटर देखेगा कि हाँ ये मेरा जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप google.com सर्च किया है. ठीक है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ एंट्री. एग्जैक्टली एक्चुअली मेरे को भी नहीं मालूम राउटर कैसे काम करता है, बट दे हैव सम काइंड ऑफ एंट्री. वो एंट्री बना लेते हैं अपने इंटरनल डेटाबेस में कि हाँ ये जो डिवाइस है, ये पर्टिकुलर डिवाइस तुम्हारा google.com से ये मंगवाया है. तो जब गूगल माने इट्स लाइक यू नो इट्स लाइक योर मॉम. It's like your mom. So जब Amazon से तुम्हारा कोई डिलीवरी आया तो मम्मी मान लो बाहर कुछ काम कर रही है. ठीक है, या पापा बाहर बैठे हैं लिविंग रूम में. ठीक है, और तुम अपने रूम में हो, अब तुम्हारी दीदी अपने रूम में है. अब पापा रिसीव द पैकेज. अब पापा बोले कि हाँ देखो Amazon से ये आया है, ये नाम मान लो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है. तो पापा क्या करेंगे, तुम्हारे घर में आएंगे, फिर तुमको देके चल जाएंगे, है ना, अपना काम करने, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. Right, do you get the analogy? It's like that. So router is Papa and ISP is Amazon there. तो वो जब पैकेज आता है यहाँ से, तो राउटर देखता है हाँ किसका नाम है पैकेज में, तो देखा कि हाँ चलो इस लैपटॉप का नाम है, सो ओके हियर इट विल गो. चलो किसका नाम है, हाँ फोन का नाम है, चलो यहाँ पे जाओ. इट्स लाइक दैट. सो दिस इज एक्चुअली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. ठीक है, और बेटर एनालॉजी कुड बी लाइक मान लो तुम्हारे दीदी का जो पैकेज है, मान लो तुम्हारी दीदी कुछ मंगवाई है, तुम कुछ मंगवाए हो, दोनों का वो जो पोस्टल एड्रेस पे नाम किसका होगा, पापा का नाम होगा. पापा शर्मा. ठीक है, ऑल्दो यू आर दीदी शर्मा, भैया शर्मा, तुम्हारा नाम क्या है, पापा शर्मा है. सो पैकेज डिलीवर हुआ पापा शर्मा के नाम में, मतलब पैकेज डिलीवर हुआ इस राउटर के पब्लिक एड्रेस के नाम पे, पब्लिक एड्रेस पे. लेकिन अब ये राउटर चेक करेगा कि हाँ भाई ये कौन मंगवाया था. ठीक है, मान लो तुम मंगवाए थे फोन, दीदी मंगवाई थी लैपटॉप, तो पापा नोस कौन लैपटॉप मंगवाया था, तो अकॉर्डिंगली पापा विल गो टू दीदीज रूम एंड डिलीवर द लैपटॉप. अगर फोन आया तो पापा नोस कि भाई मेरा बेटा फोन मंगवाया था, तो बेटे के रूम पे जाएंगे पापा एंड ही विल डिलीवर द फोन. समझ में आया क्या? आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. समझ में आया ये? অ্যান্ড্রয়েড এমুলেটর নয়, এটা আমার ডিভাইসের. এটা অ্যাকচুয়ালি আমি ইয়ে স্ক্রিন কাস্ট করছি এডিবি দিয়ে. हाँ बोलो समझ में आया ना? आईपी पब्लिक प्राइवेट एड्रेस ऑल गुड. भैया जैसे डाउट था. पूछो बहुत बढ़िया, पूछो कभी पूछो. पराग आई थिंक शिखा. भैया कुछ डिवाइसेस में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों साइमल्टेनियसली ऑन कर सकते हैं. हाँ दोनों ये पहले नहीं होता था. बोलो. हाँ तो अब नया फीचर आया हुआ है, तो वो बूस्टर भी हुआ और राउटर भी हुआ. मतलब अगर सिग्नल हाँ खत्म करो. हाँ मतलब सिग्नल अगर मतलब मेन राउटर से कम आ रहा है, तो फिर वो फोन से अगर कनेक्ट किया तो वो बूस्टर का भी रोल प्ले किया और राउटर का भी. अच्छा हाँ, या दिस इज इंटरेस्टिंग. मतलब मान लो तुम्हारा ये घर है, ठीक है, और तुम्हारा वाईफाई का रेंज ये है ना. आजकल फोन्स में जो वाईफाई का मतलब ईएम कम्युनिकेशन का जो वाईफाई का जो ये होता है अडेप्टर होता है, दैट इज एक्चुअली वेरी वर्सेटाइल. पहले ये नहीं होता था. पहले अगर रेडमी के नोट 3, नोट 2, नोट 4, नोट 5 तक अगर देखोगे,
I know about Redmi because I owned the Redmi before. My family members had Redmi. So Redmi के फोन में वो वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. So yeah, the situation that you told me, yeah, it actually does work like a booster. मतलब अगर मान लो तुम्हारे घर का रेंज इतना ही है और तुम अपने वाईफाई को कनेक्ट कर लिए, ठीक है, वाईफाई तुम्हारा मान लो फोन का लेट्स से फोन का रेंज इतना है, हाँ ठीक है, तुम्हारा फोन मान लो वाईफाई के रेंज में है, एकदम एक एज में, ठीक है, एज में है, और तुम हॉटस्पॉट भी ऑन कर दिए, वाईफाई भी ऑन कर दिया, मतलब वाईफाई से यहाँ पे घुस रहा है और तुम हॉटस्पॉट से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारा फ्रेंड 1 है, ये फ्रेंड 2 है, ये फ्रेंड 3 है, तुम्हारे हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं कमीने, ठीक है. तो मान लो तुम्हारा फोन का जो हॉटस्पॉट है उसका रेंज इतना है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा वाईफाई, तुम्हारा मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारा वाईफाई तुम्हारे फ्रेंड्स भी यूज कर पा रहे हैं ना. सो हाँ, इट्स काइंड ऑफ engineering, a very smart engineering solution to increase the range of your Wi-Fi. Yeah, it's a booster. Very smart. Good observation. जैसे आप बोले कि ISP हम लोग को दोनों IP एड्रेस देता है, V4 और V6. Yes. तो ना, some ISPs only. Like मेरा राउटर है ना, जो भारत ये एयरटेल एक्सट्रीम में, only gives me IPv4, V6 नहीं देता. बोलो फिनिश करो. तो जैसे अगर कोई दिया हम लोग को दोनों IP एड्रेस और हम लोग 2 वेबसाइट साइमल्टेनियसली विजिट कर रहे हैं, जिसमें एक में V6 लगता है, एक में V4, तो दोनों एक साथ काम करेंगे, मतलब अलग अलग एड्रेस से. हाँ, काम करेगा, दिक्कत नहीं है. अच्छा, ठीक है. जो प्रोटोकॉल्स मैंने बोला ना, प्रोटोकॉल्स हैव द IP वर्जन स्विचिंग एल्गोरिथम इनबिल्ट. ठीक है, यू डोंट हैव टू रेज क्वेश्चंस, यू जस्ट कीप आस्किंग इफ यू हैव क्वेश्चन. जब भी वाईफाई और इंटरनेट दोनों ऑन करते हैं तो एक्सेस सिर्फ वाईफाई का ही लेता है. इंटरनेट अगर इंटरनेट मतलब खुद का सिम का डेटा का स्पीड ज्यादा हो और वाईफाई का कम हो, तब भी वाईफाई का ही एक्सेस लेता है. सर क्यों? This is like an Android API implementation. You can't blame it. This is just the Android's way of prioritizing your Wi-Fi over mobile. क्योंकि Wi-Fi अनलिमिटेड होता है. Obviously मोबाइल डेटा देखो, इंडिया में हो सकता है 1.5 GB मिल रहा है हम लोग को, 1 GB 2 GB मिल जा रहा है हम लोग को, ठीक है, इतने कम प्राइस में. लेकिन बाहर अगर जाओगे ना दुनिया में, इंडिया छोड़कर कहीं बाहर गए, insane prices of mobile internet. Insane. You have to pay thrice, 4 times the price if you are using the same amount of data every day there. ठीक है. So that is why, globally Android operating system is used globally. That's why they always prefer to prioritize. मतलब दोनों हम ऑन कर दिए, लेकिन अभी I can tell कि by default मेरा Wi-Fi यूज हो रहा है. वाईफाई एक्सेस होता है. हाँ, यही वाला यूज कर रहा है. ये वाला भी अब अगर चलो मेरा Wi-Fi आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, तब हाँ मोबाइल डेटा ऑटोमेटिक स्विच कर लेगा. You can keep both on. ठीक है, दिक्कत नहीं है. तो उस टाइम आईपी एड्रेस भी वाईफाई का ही रहेगा ना? हाँ, उस टाइम आईपी एड्रेस वाईफाई का ही रहेगा. मतलब जो भी देखो तुम्हारा नेटवर्क इंटरफेस है ना, वो एक ही है. ठीक है, इधर यू यूज मोबाइल डेटा और यू यूज वाईफाई, इधर और मतलब ये बोथ नहीं, इधर और. ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल में ही द वे द हार्डवेयर्स आर इम्प्लीमेंटेड, द वे द एंड्रॉइड कर्नल इज बिल्ट, दिस इज व्हाट regulates the internet usage. ठीक है. Also, by the way, do you know it's illegal to have 2 different IP addresses in the same computer? मान लो तुम्हारे पास राउटर है, उसके 2 IP addresses. That is illegal. The way to do it is to have 2 network adapters. So if you don't know about network adapters, have you heard of network cards in your CPU? मदरबोर्ड में बैठते हैं वो लोग, ये वाला PCI स्लॉट में कनेक्ट होता है. मतलब दे आर कनेक्टेड टू द ईथरनेट. जहाँ पे देखोगे ना पीसी, तुम्हारे पीसी में पीछे ईथरनेट जो पोर्ट है, उसी के पीछे तुम्हारा ये नेटवर्क कार्ड रहेगा. ठीक है. दिस आल्सो वर्क्स एज द वाईफाई कार्ड इन लैपटॉप्स. ओके. एंड एवरी जो तुम लोग मैक एड्रेस सुनते हो ना, these network cards have 1 MAC address and therefore only 1 IP address. If you have 2 network cards, that is an illegal. Because that can be used to circumvent, क्या बोलूं मैं, criminal activities. मतलब तुम एक IP एड्रेस से क्राइम कर रहे हो, एक IP एड्रेस से जय श्री राम बोल रहे हो. So obviously it's bad thing. Doesn't make sense. You get the point, right? It's a joke.
भैया वीपीएन तक कैसे काम करता है? Oh, VPN. VPN is also interesting, but I don't know if I'll be covering VPN today because you don't know about the client-server architecture. It's the prerequisite. Okay, I'll tell you maybe in the next session. इतना हुआ क्या clear? मतलब any questions you have, anything itching back of your head, you can go ahead and ask. Maybe I'll stop here. भैया जो साइबर सिक्योरिटी वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे प्राइवेट आईपी को एक्सेस कर सकते हैं क्या, जैसे नहीं पता कर नहीं, सकते प्राइवेट आईपी ओनली राउटर के पीछे। अगर तुम हॉटस्पॉट पे मतलब देखो, अगर अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिनेरियो दे रहा हूँ, कहाँ गया मेरा स्क्रीन। मान लो 3 डिवाइसेस हैं, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी दीदी, और तुम्हारा जो दोस्त है वो कमीना है। क्या है? कमीना। हर एक दोस्त कमीना होता है ना? तो ये पर्टिकुलर दोस्त जो है कमीना है, तो ये अंडर एज है, मान लो अंडर एज, ठीक है, अंडर एज। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अडल्ट, राइट? आई एम अलाउड टू से दीज थिंग्स हियर, और अडल्ट। सो मान लो ये हेवर्स 5000 सोडा का एक किसी बोतल और को मिल ले गया। लीजिए भैया, किसी और को ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं यही लूंगा, मैं, मेरे को अच्छा लगता है। तो दोस्त है, ठीक है, एंड ही अच्छा नहीं, छोड़ो दोस्त, छोड़ो, लेट्स कीप इट सेफ, जेडीएस, वरना पीछे लोग आके मारेंगे मेरे को। तो मान लो ये दोस्त है और दोस्त नहीं है, मान लो ये थीफ है। A thief knows your IP address, sorry, your Wi-Fi password somehow. I don't know how, but somehow they know. तो मान लो वो इस राउटर से, तुम्हारे राउटर से कनेक्ट होके क्राइम कर रहा है यहाँ पे। मान लो किसी को भड़का रहा है, ट्विटर में किसी को भड़का दिया, ठीक है, किसी के नाम पे गाली गलौज कर दिया, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आईएसपी जब पकड़ेगा ना, आईएसपी को विजिबल तुम्हारा पब्लिक एड्रेस ही है, तो वो तुमको ही पकड़ेगा। whoever owns this router, ये पब्लिक एड्रेस जिससे अलोकेटेड है उसी को पकड़ेगा, थीव को नहीं पकड़ेगा। अच्छा, तो किसी के वाईफाई से कनेक्ट होकर किसी को मैसेज करेगा तो पकड़ेगा वाईफाई जिसका नाम पे उसको। हाँ, जिसका नाम पे वो वाईफाई खरीदा हुआ है कनेक्शन, तो उसको पकड़ेगा गवर्नमेंट, समझ गए। और तुम्हारा थीफ तो चोरी करके भाग गया, इसीलिए वाईफाई पासवर्ड सबको नहीं देना चाहिए, ठीक है। भैया यस, पब्लिक वाईफाईज में बोला जाता है लाइक बैंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह चोरी हो सकता है, वो कैसे होता है? लाइक बैंक डेटास। देखो, अगर इंफॉर्मेशन थेफ्ट के बारे में बात कर रहे हो तो एक्चुअली this is also a very vast topic, but I'll show you. I'll tell you. So the first thing is, nowadays because of encryption, if you people know about encryption is, you know about encryption? Anyone can explain encryption in maybe a sentence? और व्हाट्सएप में थोड़ा बहुत सुने, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। या उसका मतलब क्या है? What is the implication of encryption? क्या होता है उसमें? भैया मतलब वो जो मेन डेटा रहता है उसको कुछ और फॉर्मेट मतलब कन्वर्ट किया जाता है, और एक उसका की रहता है एन्क्रिप्शन की। Encryption key that doesn't allow other third parties to read through your information, right? अगर मान लो बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब they are looking at your packets, so they won't know that what you are sending through packets, because why? The information in your data packets is encrypted, is said to be encrypted. Encrypted मतलब, let's say your name is Dilip and you are sending that information to the person, to someone you're dating. Hi, my name is Dilip, how are you? So beautiful. You're writing that kind of message. Now people won't know that Dilip has messaged let's say Preeti, and he's trying to flirt with Preeti, ठीक है। People won't know that because this information is encrypted. Usually, how do you know if it's encrypted? You go to any website, ठीक है। You go to any website, you will see this is an HTTPS लिखा होता है ना, ये S stands for security. Actually, S stands for SSL. But if you look at this, कभी तुम लोग यहाँ पे गए नहीं होगे, you see site settings. No, sorry. Connection is secure. इसमें जाना, ठीक है। Certificate is valid में जाना, details में जाना,
certificate signature algorithm, ECDSA signature with SHA 256. So X962 ECDSA, this is the algorithm that they use. Okay. This is elliptic curve DSA. EC stands for elliptic curve, DSA नहीं मालूम मेरे को. This is the encryption algorithm that's being used. When you're talking with a discord.com के servers, this is the encryption algorithm that is being used. अगर मैं तुमको Android में दिखाऊं तो भी हो सकता है, दिखा ही सकता हूँ. Let's go to google.com. Connection is secure. क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है, सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन में जाओगे. Yeah, like this is the public key actually. Okay. Public key मतलब Google मेरे को एक public key दिया, and this public key I will be using to encrypt all my information. ठीक है. In this public key is very unique for every request. मान लो मैंने refresh कर दिया 6058C, right? अगर मान लो मैंने इसको refresh कर दिया, let's see if it changed. Oh no, it stayed. Yeah, maybe I have to like reset my internet. Like actually TCP connection को मेरे को end करना पड़ेगा. TCP is the one taking care of encryption. So I have to close this tab, preferably go offline and then reconnect. तो मेरे को वो different एक public key देगा. तो public क्या होता है? Public key क्या होता है? It's like अब cryptography में जाऊँ तो public key, private key क्या होता है? मैं क्या बताऊँ? बहुत कुछ बताने को है. इस सेशन में क्या ही बताऊँ? Public key. Let's say you have a public key, ठीक है? And this server has given you the public key. तो public key क्या करेगा ना? तो मैं अगर मान लूँ किसी चीज को, ये दिलीप, हाँ यार दिलीप, इसको मैंने public key को use करके encrypt कर लिया, ठीक है? That is what HTTPS means. मैंने इसको encrypt कर दिया. Dileep becomes something like this: 0 E F 16 19 32 71 AE. और एक चीज दिखाता हूँ. बाय द वे अभी सेशन ऑफिशियली ओवर है. आई एम जस्ट अटेंडिंग टू डाउट्स. सो इफ समवन हैज फूड टू ईट यू कैन गो, डिनर कर लो. Do you see these are all packets and this is all encrypted payload. ये पूरा encrypted है, ठीक है? This is all encrypted. This is how it looks, each packet. ये तो UDP packet हो गया. Let's say TCP कहाँ पे? UDP फालतू चीज है. TCP कहाँ है? Do you know what UDP is? UDP is also a transmission protocol. I am actually using UDP to stream my screen using Bevy for this GDGC event. That is why ये जो individual packets हैं, they are actually segments of the frame I am sending. ठीक है? That is why there are so many UDPs. TCP. So all of these are encrypted. You can see. ये तुमको पढ़ने में नहीं आएगा. लेकिन अगर मान लो मैंने कोई HTTP साइट कर दिया ना, तो मेरे को समझ में आ जाएगा. Let's say HTTP site. I don't know how to go to HTTP. Does anyone know a common HTTP site? Anyone? Question पे की करली? Without encryption, I'm talking necessarily. By the way, this is the world's first website, 1980. हम लोग का कॉलेज का वेबसाइट. Oh shit! हाँ यार. Thanks. It's sad, but it's true. Not secure. Do you see? No certificates, no encryption, nothing. And now if I go to Wireshark, start captured. Okay, I'm starting capture packet. I'm actually capturing the packets. Continue without saving. Okay, I'm waiting for some inputs. I'll go to my web browser. I'll go to reload. Okay, it reloaded. Hopefully, it's not restoring from crash. Now I'll stop it. Now I'll filter only HTTP payload.
Do you see? Do you see this? This is all unencrypted. ये unencrypted है, मतलब ये दिख जाएगा हमको. लेकिन मान लो मैं HTTPS कर रहा हूँ मैं. Select. Stun. This is what I'm sending. Do you see? This is encrypted. दिख रहा है ना? Font. I can't. Yeah, I can't zoom in. दिख रहा है ना? This is how encrypted payload looks. ठीक है? Whoever asked this question, this is actually I'll have to take separate sessions for this. हाँ बोलो. Bolchije, I think we should continue the session some other time now. Yeah, okay. Does anyone have a question? You can stay, otherwise you can leave. Okay. Yeah, Naki, they can ask. Yeah, any last maybe last 5 minutes, we can just ask, and then next week. भैया एंड्रॉइड का टर्मिनल कहाँ से खोले थे? एंड्रॉइड डीबग ब्रिज गूगल कर लेना. कनेक्ट करना, ठीक है. डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करना, यूएसबी डीबग इनेबल करना. You can just Google how to access Android shell using ADB. ठीक है. So if you go to the ये Windows और Linux के लिए दोनों के ड्राइवर्स मिल जाएंगे. Here. Download it here. Download SDK platform tools for Windows करना, वो डाउनलोड हो जाएगा. ठीक है. And then you have to enable the RSA fingerprint notification on your phone that will allow your computer to interact. USB debug your device. ठीक है. USB debugging और developer options दोनों enable करना. And then you have to go to your terminal and click on. Once it is visible and ADB is accessible on terminal, you have to go to ADB devices. तुम्हारे यहाँ पे device listed रहेगा. ठीक है. And then you have to do ADB shell. That gives you the operating system shell. ठीक है. ये Linux है by the way. This is a Linux kernel. You know, right? Android is actually internally Linux kernel. Linux कर्नल पे चलता है ना? हाँ, Linux कर्नल पे चलता है. तो इसका जो OS है, मतलब यूजर इंटरफेस है, वो सब तुम्हारा ये हो गया, क्या कहते हैं, Android, core Android, AOSP, Android Open Source Project. भैया एक और क्वेश्चन लास्ट पूछो. जैसे आप बोले राउटर जो है, मतलब जो सारा ट्रैफिक है वो उसी का थ्रू से जाएगा ना, आईएसपी के, मतलब आईएसपी को. या हाँ. तो अगर कोई हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया फोन का, तो वो ट्रैफिक तो उस फोन से होके जा रहा है. हाँ, फोन को पकड़ेगा. तो हाँ, तो जो मतलब फोन का ओनर है वो तो ट्रैफिक कंट्रोल भी कर सकता है उसका, बाकी लोग जो चला रहे हैं. हाँ, कर सकता है. एक्चुअली देयर आर this is the Android terminal, right? You saw. Whatever. So तो टर्मिनल, लिनक्स टर्मिनल में ना एक ऑप्शन होता है, मतलब सो इंटरनल नेटवर्क ना, एक प्राइवेट नेटवर्क में whenever your router is giving access to internet to number of devices, तो router knows each device का MAC address. ठीक है. Now if you're going to your Android device, you go to Wi-Fi settings. I am the hotspot owner, let's say. ठीक है. तो मैं यहाँ पे सेव नेटवर्क्स में जाऊंगा. सॉरी, नॉट सेव नेटवर्क्स. सॉरी, नॉट हियर. हॉटस्पॉट सेटिंग्स में जाऊंगा मैं. ठीक है. आई गो टू लेट्स से
ये एक्चुअली ऑप्शन आ नहीं रहा है, बट यू कैन यू नो सिलेक्ट एंड डी हॉटस्पॉट को सिलेक्ट। ऑन कीजिए शायद आ जाए। हाँ हाँ हॉटस्पॉट को ऑन कीजिए शायद आ जाए। सही बोले, देखते हैं। पर इधर भैया, एक ऑप्शन है, नहीं आ रहा है। हाँ हेलो बोलो बोलो बोलो। भैया, जैसा आपने कहा कि मतलब अगर कोई हमारे हॉटस्पॉट से या इंटरनेट से कोई अनोनिमस कुछ एक्टिविटी करता है, हम्म तो पुलिस जो है जो उसको पकड़ेगी, जो ओनर है। हम्म पर मुझे राउटर का तो नहीं पता, पर वाईफाई जो मतलब अपना जो हॉटस्पॉट कभी हम शेयर करते हैं, तो हम्म। उसमें जो मतलब यूज कर रहा होता है यूजर, उसका भी तो आईपी एड्रेस हमारे मतलब शो करते रहता है वो हॉटस्पॉट वाले सेक्शन में, तो उसके थ्रू नहीं वो उस तक पहुंच सकता है। या दैट्स करेक्ट। हाँ मतलब तुम अपने एक्टिविटी लॉग्स में देख के तुम बता सकते हो, देख सकते हो कि एक्चुअली में कौन एक्सेस किया। लेकिन मैं बस बता रहा था एट दिस पॉइंट द पुलिस डज नॉट नो किसने क्राइम किया, तो वो तुमको ही पकड़ेगा पहले। हाँ उसके बाद साइबर क्राइम फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट आएगा, फिर वो तुम्हारे डिवाइस के तुम्हारे तुम्हारे हॉटस्पॉट या तुम्हारे फोन या तुम्हारे राउटर के लॉग्स को चेक करेगा, दिखाएगा कि ये कौन एक्सेस किया, ये किसका डिवाइस है। ठीक है, फिर दिखाएगा कि हाँ इट वाज नॉट योर डिवाइस, इट वाज नॉट योर दीदीज डिवाइस, इट वाज एक्चुअली सम अनोनिमस डिवाइस दैट कनेक्टेड। और उसका मैक एड्रेस उन लोगों को पता चल जाएगा। मैक एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द नेटवर्क कार्ड। जब तुम्हारा नेटवर्क कार्ड, वो जो मैंने अभी दिखाया फोटो आ गया, ये जो फोटो जब बनता है ना नेटवर्क कार्ड का, ये बाय द वे ये दिख रहा है तुम लोग को, ये डब्बा, ये वाला, हाँ हाँ ये तुम्हारा वाईफाई है। ठीक है, दिस इज योर माइक्रोवेव ट्रांसपॉन्डर। ये तुम्हारा माइक्रोवेव छोड़ता है, मतलब जिससे तुम्हारा वायरलेस कनेक्शन होता है। एंड दिस इज द ईथरनेट पोर्ट। बट एनीवे, ये जो माइक्रोचिप दिख रहा है, इसमें तुम्हारा मैक एड्रेस तुम्हारा वो रिटर्न रहता है। ठीक है, not this microchip. There is some storage chip. I don't know. So in one of these storage chips, your MAC address is fingerprinted. मतलब जब भी ये आउट मतलब इंडस्ट्री से बाहर होता है, मैन्युफैक्चर होके, वो तुम्हारा परमानेंटली उस लाइफ साइकिल के लिए उसका परमानेंट एड्रेस मिल जाता है। तो बाय मैक एड्रेस यू कैन एक्चुअली मान लो वो जो हैकर है, you don't want him to connect to your Wi-Fi network or hack into your Wi-Fi network. So what you can do is तुम देखोगे कि हाँ ये बंदा है, उसका ये जो नेटवर्क कार्ड है उसका मैक एड्रेस मेरे को मालूम है, इस मैक एड्रेस को मेरे को ब्लैक लिस्ट करना है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्लैक लिस्ट इट। इवन ऑन योर एंड्रॉइड, मैंने दिखा नहीं पा रहा हूँ, मे बी आई थिंक समवन कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे वहाँ पे ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन आता है। ठीक है, यू कैन लिटरली ब्लैक लिस्ट पीपल। भैया मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है? नहीं, वो चेंज नहीं होगा, वो परमानेंट है। इट्स एक्चुअली द मैन्युफैक्चर हियर। एंड मैक एड्रेसेस को IEEE, यू नो IEEE, No. Not IEEE, I think it's some standardization organization that actually issues MAC addresses. मतलब जो भी ताइवान में मैन्युफैक्चरर्स है, जनरली नेटवर्क कार्ड्स आर बिल्ट इन ताइवान एंड स्टफ, ताइवान चाइना में बनते हैं, तो वहाँ पे जो मतलब देयर इज सम स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, मैक एड्रेस प्रोवाइडर। सुने थे कहीं भैया कि रूट करके मतलब चेंज हो सकता है फोन में भी। नहीं, रूट करके भी नहीं, ये इट इज इम्प्रिंटेड ऑन योर डिवाइस, वो चेंज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो एक्चुअली फर्मवेयर होता है, FIRMWARE। फर्म मतलब जो हिले ना अपनी जगह से, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत हो गया 9:14, चलो नेक्स्ट डे खाना खाना है। ठीक है, भैया एक और क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन, चलो बोलो। ये भैया इस सेशन में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, मतलब आप ही ने बताया जो इंटरनेट कैसे वर्क करता है बेसिकली, उसमें आधा आपने बताया। मतलब ट्राई शो के बारे में बताया। तो ट्राई तो बेसिकली भैया वो रूल्स एंड रेगुलेशन इशू करता है जो इंटरनेट के बारे में, जो कैसे नहीं वो नहीं, यूज होना चाहिए। ट्राई पर नहीं, ट्राई एक इंडिया लेवल में, नहीं नहीं, वो इंडिया इंडियन का लेवल टेलीकम्युनिकेशन लेवल, हाँ, वो इंटरनेट का कोई रेगुलेशन नहीं करता। TRAI is responsible for maintaining all communication devices and regulations. So internet is not really controlled by TRAI. But yeah, go ahead. नहीं भैया, मेरा क्वेश्चन था जो एक्चुअली ये इंटरनेट प्रोवाइड कौन करता है, मतलब कौन डिसाइड करता है जो कितने अमाउंट का इंटरनेट किसको मिलना चाहिए। बेसिकली वो क्या एक हब होगा या कुछ ऐसा, हाँ, जहाँ से right. एटलीस्ट You're ओरिजिन right. क्या है, मतलब इंटरनेट का कहाँ से मतलब आता है पूरा सर्कुलेट जो होता है वर्ल्ड में, इंटरनेट कहाँ से। देखो, अगर एक आइडियल दुनिया हो ना जहाँ पे पैसा का कॉन्सेप्ट नहीं हो, तब तुम यू कैन जस्ट फॉर फ्री यू कैन एक्सेस द इंटरनेट। ठीक है,
All you need is a fiber optic cable that is coming from the undersea cables. इंटरनेट कुछ है नहीं, इंटरनेट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क. मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई भी ओनर नहीं है. देयर इज वन नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ द इंटरनेट. ठीक है. इंटरनेट मतलब अगर एक लंबा सा वायर है एंड इफ यू आर कनेक्टिंग योर फ्रेंड्स कंप्यूटर एंड योर कंप्यूटर टू दिस, तो अपना एक इंटरनेट बना लिए. समझ गए. देयर इज नो ओरिजिन पॉइंट ऑफ इंटरनेट. बट इफ यू आर आस्किंग हु कंट्रोल्स द amount of internet you can access, that ISP or your ISP is responsible. अगर किसी को अगर किसी को गाली देना है तो ISP को दो, मेरा डेटा खत्म कर दिया. मतलब their ISP is actually, देखो, all your data actually is flowing from the internet cable to your ISP, right? I told you, right? Regional ISPs. Regional ISPs जो राउटर्स हैं, उन राउटर्स में लिखा रहता है. ठीक है. उन राउटर्स में लिखा रहता है your MAC address, for example. ठीक है. So they know exactly which SIM card and which number to bill. जब भी ये पैकेट आएगा ना, रीजनल ISP पड़ेगा, ये तो इस एड्रेस से है, इस एड्रेस में किसका सिम है, देखता हूं. अच्छा, कौन है? शिवम मोदी का सिम है. चलो उसका 10 MB काट लो, डाउनलोड किया है. ऐसे काम करता है. दिस इज लोकल ISP, दिस इज योर राउटर, दिस इज यू. ठीक है. क्वेश्चन आंसर क्लियर हुआ. रीजनल ISP इज द रेगुलेटिंग बॉडी. हाँ भैया ठीक है. ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू लेटर नेक्स्ट संडे. गुड नाइट. गुड नाइट. इसको check करिए. ये कर देंगे अपन बाद में. हाँ, गुड नाइट. गुड नाइट भैया. गुड नाइट. गुड नाइट. डैम जॉन तो दाई चला गया. ओके. हाँ, अरे तू अपना माइक ठीक करना, विकास. आवाज ही नहीं आ रहा है. रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए जो भी कर रहे हैं.